सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। बहुत ही खुशी का मौका है आज का दिन। भारत गणतंत्र बनने की शुरुआत हुई थी और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान दिवस, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है और हम भारत के लोग इस समय आजादी की जो अमृत महोत्सव है उसकी जन भागीदारी का सबसे बड़ा भारत में यह अभियान चल रहा है, जिसमें देश और विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। और अमृत काल का सकारात्मक भारत 187 कार्यक्रम को सहयोग प्रदान किया है प्रोफेसर प्रफुल्ल भाई ने, जो कि पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन हैं। और देश विदेश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रमैया साहब हम लोगों को बराबर सपोर्ट करते हैं। रात में वहां लगभग 1-2 बजते हैं, लेकिन इस वेबिनार में जुड़कर वो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का स्वरूप दे देते हैं। और भी लोग हैं। इस वक्त देखिए हम लोगों ने 187 कार्यक्रम किया है। ये 2047 तक न जाने कितने होंगे, वो आंकड़े आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेड फेयर में भी गए थे, उसकी बात करेंगे। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उस पे बहुत विद्वान यहाँ पर हैं, जैसे मिस्टर KL शर्मा जी, राजीवनाथ जी, प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी। इन सब चीजों पर वीना जैन जी एक गंभीर चर्चा होने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आखिर ये सीरीज शुरू क्यों की गई। क्योंकि जब से जन भागीदारी की घोषणा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, तो RJS ने 14 अगस्त 2021 से इसका अभियान शुरू कर दिया। और कई मेलों को समर्थन देता है कई जगह, क्योंकि पूरी भारत की और विश्व की झांकी वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड को ये RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने समर्थन किया है। और वहां पर हम लोग लगातार जा रहे हैं 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। ये सारी वीडियोस जो हैं, एक दिन में 20 वीडियो बनी थी, 18 नवंबर का दिन था। और 14 से 27 नवंबर तक हम लोग समर्थन दे रहे हैं। 27 को अवार्ड फंक्शन के साथ ये मेला जो है संपन्न हो जाएगा। पूरे भारत की झांकी यहाँ दिखाई दी रही है। और ITPO के ऑफिशियल्स को हम लोगों ने थैंक्स गिविंग किया था। यहाँ पर सत्येंद्र सुमन त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, कुलदीप राय जी आए, ये एम्बेसडर हैं लोग, लाफ्टर के और पॉजिटिव एम्बेसडर हैं। और पत्रकार आए थे। धनंजय जी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस पे है हमारे निजी आग्रह पर। धनंजय जी जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 30 साल से ज्यादा की पत्रकारिता है उनकी, वो जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही गंभीर चर्चा होने जा रही है। तो ये आप सीन देख रहे हैं जो कि अलग अलग स्टॉल पर, अलग अलग पेवेलियन में, वहां पर जो वेबिनार में आए थे वैद्य रवि नारायण जी, जो कि आयुर्वेद का जो संस्थान है उसमें DG है इस समय, तो उनसे भी हम लोग इंटरेक्ट हुए। कई मंत्रालयों के स्टॉल को समर्थन दिए। ITPO को के CMD यहाँ प्रदीप खरोला जी दिख रहे हैं, और OSD ITPO कर्नल पुष्पम कुमार जी। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में RJS पॉजिटिव मीडिया जो है, इन लोगों के समर्थन से, इन लोगों के मनोबल बढ़ाने से हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा काम करने का। यहाँ पर जो DGM है विवेकानंद विवेक जी, इनको किताब जो है हम लोगों ने समर्पित किया कि इसमें भी ITPO के पिछले अंक की चीजें हैं जो ITPO के हम लोग
अधिकारियों को ये समर्पित कर रहे हैं ताकि उन लोगों तक भी ये पॉजिटिव मीडिया। कल की बात है, ये गेट नंबर 10 के पास का सीन है। ये वसुधैव कुटुंबकम की जो है थैंक्स गिविंग की यात्रा हो रही थी कि सभी मेलों में इसको सफल बनाने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सबका हम लोगों ने अभिवादन किया, हाथ से नमस्कार किया। और यहाँ पर प्रेम सागर जी गुजरात से आए हुए हम लोगों के साथ आरजेएस फैमिली में जुड़े हुए, ये बच्चों के साथ भी हम लोगों ने तिरंगा भेंट किया बच्चों को, और प्रतीक रूप में हम लोग फूड कोर्ट भी गए, वहां पर भी लोगों के साथ जो है वो हाथ से नमस्कार और थैंक्स गिविंग किया। साफ सफाई बहुत थी, रेड कारपेट और आप देखिए ग्रीन कारपेट यहाँ पे फूड कोर्ट में है, कहीं भी धूल नहीं उड़ रही थी। तो ये वातावरण था प्रगति मैदान को। और शाम को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है समर्थन दिया संगीत को, जो कि गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा ये दिल्ली गेट पे है, अम्बेडकर स्टेडियम के पास। शाम को हम लोग वहां गए, यानी सुबह 10 बजे से ये यात्रा जो शुरू हुई थी वो ट्रेड फेयर में 6 बजे संपन्न हो गई। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली गेट के पास और राजघाट के पास, और यहाँ पर आरजेएस फैमिली को सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर कुसुम शाह जी जो कि आरजेएस फैमिली के वेबिनार में आ चुकी थी, उन्होंने आमंत्रित किया था। कुसुम शाह जी हैं, अध्यक्ष हैं गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के। यहाँ पे देखिए जो प्रेम सागर जी हैं, मैं हूं, और प्रफुल्ल पांडे जी आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट हैं। यहाँ पे अचानक से ये घोषणा हुई कि पॉजिटिव मीडिया के को सम्मान दिया जाएगा। तो हम लोगों का सम्मान हुआ, उसके बाद भोजन हुआ, और उसके बाद हम लोग आए। तो ये सब कुछ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पर अपलोड हो रही है। यानी कि जो इतिहास बनाने की जिद है उसके क्रम में हम लोग 2 कदम और आगे बढ़ने वाले हैं, और हर रविवार आरजेएस वेबिनार का क्रम जो है टूटे नहीं, उस पर भी जद्दोजहद चलती रहती है। उसका शेड्यूल कैलेंडर जो है वो जारी हो जाएगा। आप देखेंगे कि उसके कैलेंडर में क्या क्या चीज शामिल किया जाता है। अगले महीने का भी कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। अब हम सीधा जो है रुख करते हैं द अवेयर कंज्यूमर के हर महीने निकलने वाले अंक को यहाँ पर विषय बनाकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस महीने का जो है वो कंज्यूमर्स डिमांड एक्सक्लूसिव लॉ फॉर मेडिकल डिवाइसेस। तो द अवेयर कंज्यूमर का ये टॉपिक है, लेकिन इसको अमृतकाल का सकारात्मक भारत के 187वें अंक में शामिल किया गया है ताकि ये पुस्तक के अंदर आ जाएगी। पुस्तक जो है अगले साल के शुरू में जो है रिलीज होगी, तब हम लोग उस पुस्तक में भी इसकी कहानी आज के जो भी वक्ता हैं उनकी जुबानी हम लोग सुनेंगे। तो मैं सीधा आमंत्रित करता हूं अपने आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर प्रफुल्ल डी सेठ जी को, जो वाइस चेयरमैन है पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन, जो कि को ऑर्गेनाइजर है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, सभी का स्वागत है। प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल भाई अनम्यूट कर। Jai Hind to everyone and warm welcome. As Manna ji has already informed, the topic of this morning's discussion is consumer demand exclusive law for medical devices in India. So first question that arises in our mind is why so? And I think the discussion that everyone would be thinking right now is that hope we get enough of answers today to satisfy this question. Now, as we dwell a little bit more on this topic, I was just looking at some of the past data. The definition of devices, which was adopted in the Drugs and Cosmetics Act 1940, which is still in force till we get our new act. The devices are intended for internal or external use in diagnosis, treatment, mitigation, or prevention of disease or disorders in humans or animals, as may be specified from time to time, etc., etc. This continues, which was brought into force in 1940 with minor changes maybe. At the same time, I got a policy statement for review
from the International Pharmaceutical Federation a few days ago. So just for the sake of comparison, I would like to inform that what is the proposed definition that FIP is going to adopt in 2024. And you will see the stark difference between what we have and what is going to be announced or adopted in 2024, for which the position paper is already out for review. Regarding medical devices, and this is with reference to access to safe and quality medicines and devices in respect of role of pharmacists. It says regarding medical devices, these are defined by WHO as any instrument, apparatus, implement, machine, appliance, implant, reagent for in vitro use, software, material or any other similar or related article intended by the manufacturer to be used alone or in combination for medical purpose. Now you see the stark difference. We are so far very generally talking about the devices definition, and now look at how specific it is getting. I think something to discuss about. The government here also has placed a new drug, medical devices and cosmetic bill 2023 in public domain, but many have found that the bill is not found to be suitable and a more comprehensive framework is needed. And I guess one is asking for such a statute as we have announced in the Aware Consumer, a law for medical devices in India, and that law, what it should contain, a very comprehensive framework. Whether it is by itself or whether it is part of it, whichever way we decide, I think it has to be very, very comprehensive, and it should take care of everything that is in 2024. It should be the state of the art. This is where the debate has begun, that we need a standalone bill for medical devices. Today we will discuss threadbare, the topic addressed in the November 2023 issue of the Consumer, demand exclusively for law for medical devices in India. To do proper justice to our discussion today, we have two of the most informed authorities, and I use the word authorities very selectively on the subject. We have with us Shri K.L. Sharma and Shri Rajiv Nath. Let me introduce both the speakers briefly. Mr. Rajiv Nath will deliver the keynote address in about 10 to 15 minutes. He's expressed his views, and Mr. K.L. Sharma will give his views as the chief guest today. So first I would introduce Mr. K.L. Sharma. He's IAS bureaucrat, a retired joint secretary in the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and as you can make out, he's a career civil servant for 4 decades. But what is more important for this meeting is that between 2014 and 2017, he worked as Joint Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare. He streamlined the processes and rationalized the rules of regulation of drugs, cosmetics, medical devices, and clinical trials. Very, very important work. As you can see, he's done. His leadership witnessed prohibition of the irrational fixed dose combinations in 2016, another burning issue. India perhaps is the only country which has so many combinations. He also conducted the largest ever drug survey, 2014-16, involving over 47,000 drug samples
and Bijonda and myself were fortunate to be part of the core committee. Also, risk-based inspections of the pharmaceutical manufacturers and surprise inspection of the wholesale pharmacies in Delhi in 2017. He's also author of the book, Healing the Pharmacy of the World. It tells you everything, what the regulatory should be doing and what should be our perspective of the pharmacy of the world. He holds master's degree in economics from Himachal Pradesh University, Bachelor of Law degree from Delhi University, and master's degree in developmental studies from University of York, United Kingdom. Now I'll introduce briefly Mr. Rajiv Nath. Mr. Rajiv Nath is the Managing Director of Hindustan Syringes and Medical Devices, known popularly, this company is known popularly in India as HMD. It was formed by his father, Sri Narendra Nath, in 1957. Interestingly, Sri Narendra Nath was a pharmacist. We remember gratefully how during the recent COVID pandemic, Sri Rajiv Nath and the staff at the HMD extended their humanitarian service by supplying syringes under the popular brand Dispovan and needles for administering vaccines to millions of people, not only in India, but around the world to combat the COVID virus. We salute you, sir. Rajiv Nath is also a forum coordinator for the Indian medical devices industry, AIMED. Sri Rajiv Nath's his mission is to ensure that quality medical devices are accessible and affordable with locally manufactured and medical devices for the masses. What a laudable goal. His vision is to place India among the top 5 medical devices manufacturing hubs in the world. So this is brief introduction of Sri Rajiv Nath. Now, without taking much time, I would like to hand over the proceedings to my big brother, Bijon Mishra, international consumer policy expert. Bijonda, sir. Thank you very much, Praful Bhai, for kicking the ball and getting the conversation started. You know, it's a very interesting conversation, let me tell you all, and I must also introduce some of our key speakers who have been introduced, but also participants. You know, they're very important because, for example, Professor Ramaiah, all the way from US at midnight, joins us because he wants to not only listen, but participate. You see, our whole motive, RJS परिवार का केवल एक ही लक्ष्य है, कैसे हम लोग सबको लेकर एक पॉजिटिव फीलिंग ला सके विश्व भर में, ये हम लोगों का एक लक्ष्य है. और उस लक्ष्य को देखते हुए I am so happy that many people on a Sunday at 11 o'clock, I see Dr. P.L. साहू जी, आप तो ऑफिस में बैठे हैं संडे को 11 बजे. आप ऑफिस में हैं क्या? Yes, sir. I'm in office because I have meeting at 12:30 and another meeting at 1:30 with Sri Anurag Thakur ji. So I have to go after this meeting. जी. देखिए, पूरा सरकार को वो जगा के रखे हैं. वो लोग संडे को भी काम कर रहे हैं. और इस ढंग के लोग हम लोग के बीच में हैं. You know, Dr. Jaga Shetty, you know, former drug controller of Karnataka, he has joined on a Sunday at 11 o'clock because, you know, I'm sure Mr. K.L. Sharma will recall, आपने जब वो पूरा रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे लॉ में, तब जगा शेट्टी को आपने निमंत्रण भेजकर उनको इनवाइट करके दिल्ली में रखे आपको मदद करने के लिए. So all those days I can't forget. You know, I cannot forget. The kind of focus, I will tell you the other side of the two key people, you know, Rajiv Nath ji and K.L. Sharma ji. K.L. Sharma ji भी काम के कीड़े हैं. जहाँ काम वहाँ K.L. Sharma. You know, he doesn't waste time.
He gives time to everybody. I recall as patient groups representative, whenever I would go to him, he will not deny me his time. He will give me time. But he will give me only that much of time which is required. He will not unnecessarily sit and chat, pleasantries with me. Only calm से मतलब. और ये बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक है और हमारा ऑलवेज एक संबंध बन जाता है उस ढंग के लोगों के साथ जो काम को महत्व देता है, देश को महत्व देता है, सिटीजन्स को महत्व देता है, which is very, very important. And I am very happy that he accepted to be with us on a Sunday at 11 o'clock to discuss on a very important topic. Why it is important, which Rajiv Nath ji will tell you. वो लोग कहाँ से शुरू किया, हमको अभी भी याद है जब उनके फैक्ट्री हम फर्स्ट टाइम विजिट किए, उनके बाबूजी रहे उस समय. What a passionate person, what a dedicated person. And I am very proud to tell all of you that an able ladka, an able son of the family has taken over and he is training his son now to take over. Now that is the spirit. How do you develop, succession? How do you develop brand? How do you develop the country's image? हमको याद है जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, उस समय उनका एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ना का बराबर था. Today, I'm so proud that our Indian product is being seen all over the world in more than about 190 UN countries who are part of the WHO. I mean, if some countries are not buying it, they are actually missing out on a quality product from India. What I am very proud is that उनका लक्ष्य भी एक ऐसा फोकस्ड है कि कैसे पेशेंट्स को सेफ्टी ला सकते हैं हम लोग, कैसे क्वालिटी दे सकते हैं और कैसे हम लोग उसको उपलब्ध करवा सकते हैं उस प्रोडक्ट को. His company has shown that manufacturing quality products does not mean it becomes expensive. He has shown to the world that good quality products can become very competitive and affordable for the consumers. Today, I am proud to say that he is making the whole world access an Indian branded product and at a most affordable price, competitive around the world. कोई उनके सामने आ नहीं पाते हैं, and I am proud of that. But of course, we all have to work together to make him sustain this challenge or the championship which is leading us to. आज का जो हम लोगों का डिस्कशन है, this discussion is very important because क्यों exclusive law जरूरत है, हमारे दोनों speakers बताएंगे. I would request them that you be as brief as you can, but do not deprive us of knowledge or information which we need to have. But at the same time, give enough time for participants to ask questions. क्योंकि जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत सारे चीज निकल कर आएगा जो हमारे माइंड में घूम रहा है, जिस प्रश्न का हमको आंसर चाहिए. तो इसलिए आप संक्षेप में आपका as a keynote speaker and as the chief guest, please give your presentation. We are very anxious. I can see very, very eminent people who have joined on a Sunday at 11 o'clock. That means they're interested in the subject. And I would request everybody to stay on, to ask questions, because your questions will answer a lot of questions which are working in the minds of citizens of our country. And as Uday Manna ji said, all these proceedings are recorded, put on the YouTube. People can see it, circulate it, share it, and take it forward. Without wasting any more time, I would like to call upon the keynote speaker, Shri Rajiv Nath ji, who has been introduced from 360 degrees by Praful Bhai and me, in our own manner. So, Rajiv ji, please open up and explain to us, as an industry leader in India who is working globally, why we need an exclusive law to protect the interest of the citizens and the country in medical devices. Mr. Rajiv ji, the mic is yours. Thank you so much. Namaskar, everyone. Thank you, Mr. Seth. Thank you, Mr. Mishra. Thank you, Manna ji, for organizing this meeting today on a very, very critically important topic for all stakeholders, whether
you're a consumer or a doctor or a user, healthcare provider or a parent or a child for a parent, when you go to hospital, you have to access these devices and they need to be definitely be safe and they need to be of high quality. So I will just share my screen with you all. Can you kindly allow me to share the screen? Backend team, please allow. Technical team, please allow him. Now. Yes, Rajiv ji. Yes, just a second. Can you all see my screen? Yeah, put it on slideshow. Yeah. So we are here to address the burning question that why we need to have a law for medical devices and why separately from drugs. And this is our vision which we have for the regulator. हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो रेगुलेटर हो वो एक माली की तरह होए जो कि बगीचे से वीड्स निकाले लेकिन हरी भरी घास ना निकाले. अगर नहीं निकालेगा तो ये बगीचा जंगल बन जाएगा. We cannot afford to have a jungle which we've been having for such a long time when hardly any medical devices have been regulated. At the same time, we also cannot have a position over there where you will not allow the green grass to grow over there. So why do we need regulations? This is what you will see normally in India. A typical site. अगर regulations होएगी या नहीं होएगी, हर बंदा कोशिश करता है to get ahead of the other person. And in doing that, instead of going fast, actually we become slow down because we create chaos. And what's actually required is if we follow a discipline, we follow regulations like they do it in Germany. This is in Germany where there's an accident and every German driver knows that he has to park his car immediately on the left or right-hand side of the road to give the center lane completely free for access to the bottleneck for the police vehicle, for the ambulance, for the fire brigade to reach the bottleneck and clear the accident. So when you have people in Germany who follow such kind of regulations, they know their role, each one follows his role, the expectations are clear, then you need not even have a position where you are having something which is impeding your speed. So instead of having maximum speed limit, like in many countries of 80 miles per hour or 120 kilometers per hour, Germany has a minimum speed limit on many highways of 120 kilometers per hour. And you can go as fast as you want. Because of this discipline, they're able to do it in a safe manner. Law क्यों होना चाहिए? ये regulations के लिए है. लेकिन लॉ के लिए होना, रीजनेबल होना, सिंपल होना, इम्प्लीमेंटेबल होना बहुत जरूरी है. Recently, I was talking to Mr. Gadkari. I said, you made beautiful expressways in India now. But what is the point of these beautiful expressways when you have some signboards putting over there? Speed limit is 60 kilometers per hour or 100 kilometers per hour. When the expressway is designed for 120, 150 kilometers per hour. पुलिस वाले खड़े होते हैं, हमारे को तंग करते हैं, हैरेस करते हैं. अगर हर ड्राइवर ही 60 से ऊपर चला रहा है वहां पर और हर ड्राइवर को रोकेंगे तो उस लॉ का क्या फायदा? अगर हर ड्राइवर वो लॉ तोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है. तो he immediately understood and he says, I've been discussing with every state authority because India is a federation of states. Every state has to be consulted. Every state through which the expressway has to pass has to review its rules and they have to redefine the rules. So even I'm seeking that the speed limit needs to be increased to 140 kilometers per hour on these expressways. जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, तभी फायदा होगा.
ये एक्सप्रेसवे बनाने का. So this is the reason why laws need to be simple and reasonable and implementable. Medical devices जो इंडिया में है, nearly 70% are imported. Nearly 2/3 of that comes from just 2 countries, China and USA. Unfortunately, जो इंडियन ब्रांड्स हैं, मेजॉरिटी पे ट्रस्ट डॉक्टर नहीं करते हैं, और जो रेगुलेशंस हमारी रही हैं वो गलत रही हैं. ड्रग के हिसाब से हमारे को रेगुलेट करा गया है और इनकम्प्लीट रेगुलेशंस रही हैं. मिस्टर के एल शर्मा वाज वन पर्सन हु केम फॉरवर्ड in 2016 and helped us a lot, but जो उनका टास्क था वो कंप्लीट नहीं रहा. So finally we have to go forward and complete the task. We have been using third country regulations to prove our quality to buyers in India and to doctors in India. Because of the incorrect regulations, manufacturing has not come forward. अगर आप किसी बिल्डर को बोलोगे रेजा साहब को कि गुड़गांव में आके 100 स्टोरी की इमारत खड़ी करें, why will he create a 100-story building when Gurgaon or Haryana allows only till 30 story, for example? Do you think he will join and create a joint venture with DLF for doing that? Or he will wait for the law to be passed in Haryana, and after only the law is passed, he'll create a 100-story building? Do you think he'll go wrong with DLF's assurance? नहीं, आप चिंता मत करिए, हमारी बातचीत हो चुकी है, अगले महीने हरियाणा में बिल पास होने वाला है, आप बिल्डिंग शुरू करिए, आपको पूरी एश्योरेंस है. कोई भी बिजनेसमैन वर्बल एश्योरेंस पे नहीं जाता, इसलिए वो इमारत कभी खड़ी नहीं होगी जब तक लॉ पास नहीं होएगा. ये ग्राफ है इंपोर्ट्स का. About 60,000 crore rupees worth of medical devices we import every year. At the same time, we are also good in quality and exports. और तकरीबन $3 billion का हम एक्सपोर्ट करते हैं सालाना. More than 24,000 crore rupees every year. अब जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, मैन्युफैक्चरर्स या तो रेगुलेटरी मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, पेशेंट सेफ्टी के लिए बनते हैं वो मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स, या मैंडेटरी स्टैंडर्ड से हटके वो खुद ISO और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो उनसे होते हैं उनको फॉलो करते हैं टू शो दैट देयर क्वालिटी इज बेटर देन द बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड. या हमारे जैसे लोग जिनको अपने ब्रांड पे शौक है और दुनिया में टॉप 3 बनने का शौक है, वो क्वालिटी डिफाइन बनाते हैं जो कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से या वॉलंटरी स्टैंडर्ड से आगे हुए और परफॉर्मेंस में कंपटीशन से आगे हुए, और वो क्वालिटी फिर वो ब्रांड के साथ एक लिंक हो जाती है और वो कंसिस्टेंसी वो जो मैन्युफैक्चरर है वो डिमांड करता है अपने स्टाफ से. तो नॉर्मली इस तरीके से क्वालिटी डिफाइन होती है. 2016 में आईमेड और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक वॉलंटरी QA सर्टिफिकेशन शुरू किया था, ICMET सर्टिफिकेशन, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक प्रूफ कर सके अपने कंज्यूमर्स को, अपने यूजर्स को, कि जो वो डिवाइसेस बना रहे हैं इट इज बीइंग मेड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. नॉर्मली इंटरनेशनली जो रेगुलेशंस होती हैं वो इंडिया की तरह नहीं होती हैं. इंडिया में गवर्नमेंट ही लॉ मेकर है, गवर्नमेंट ही इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट ही जो इंस्पेक्टर होता है वो शाम को एक इनफॉर्मल कंसल्टेंट जाता है मैन्युफैक्चरर के लिए, वही ट्रेनर होता है. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता, हर चीज एक उन्होंने लेयर करके अनबंडल करा हुआ है. गवर्नमेंट का काम है रजिस्ट्रेशन बनाना, वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट करती है जो कि ऑटोनोमस होती है. जो अथॉरिटी होती है वो खुद इंस्पेक्शन नहीं करती है, वो थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करती है, सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो कि कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी होती है, जो रेगुलेटरी बॉडी को हेल्प करती है बताने के लिए कि कौन सा मैन्युफैक्चरर रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा. और मैन्युफैक्चरर जो लॉज होते हैं वो सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं. वो आसानी से वो लॉ समझ के उनको कंप्लायंस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और अगर कोई गलती होती है तो वो गलती अपनी मानता है, इंप्रूवमेंट लाता है. उसको कोई डर भाव नहीं होता कि उसकी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा. एक ट्रस्ट के तरीके से, एक इंप्रूवमेंट के तरीके से ये सिस्टम चलता है और इससे कंज्यूमर को बेनिफिट होता है. के शर्मा जी के टाइम पे 2017 में भारत ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी घोषित करी थी, एंड इन दैट नेशनल हेल्थ पॉलिसी दीज वर द की elements regarding regulations of medical devices. At that time, it was defined that we definitely need to strengthen regulations for medical devices, and we need to have a
separate regulatory body for medical devices. And our standards need to be harmonized with international standards. और जो post market surveillance है, और that's why this today's topic is very important for all consumers. Even I'm a consumer. Consumer और डॉक्टर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि उन्होंने ही फीडबैक देना है रेगुलेटरी बॉडीज को। जो ये पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस प्रोग्राम होता है उसके हित से एक फॉर्म भर के बताना है जब भी उनको कोई क्वालिटी का इशू है, जब वो देखते हैं कि वो जानलेवा हो सकता है, कि हानिकारक हो सकता है, एंड इट कैन नीड टू हैव अ सर्जिकल इंटरवेंशन. So the regulator will then be seeking from manufacturers systemic improvements. And the whole purpose is prevention. The whole purpose is to prevent adverse outcomes for poor quality or for using pre-owned equipment. ये हमारी जो हिस्ट्री रही है मेडिकल डिवाइसेस में बड़ी आई वुड से काफी पुअर रही है. जो पहले मेडिकल डिवाइसेस हैं, सिरिंजेस, IV सेट, ट्रांसफ्यूजन सेट, वो 1989 में रेगुलेट हुए थे. हमने मांगी थी रेगुलेशन. नॉर्मली मैन्युफैक्चरर रेगुलेशन से भागता है, लेकिन हमारे को मालूम था कि अगर हमने क्वालिटी अपनी इंप्रूव करनी है और पेशेंट को हमने हेल्प करना है और फिर कंपटीशन चाहिए मार्केट में, तो अच्छी रेगुलेशंस चाहिए. और आप देखिए कि 2019 तक खाली 32 मेडिकल डिवाइस रेगुलेट हुए 30 सालों में, एक एक करके, और वो भी एज ड्रग्स इनकरेक्टली. एंड एवरी टाइम यू आर गिवन अ वर्बल एश्योरेंस कि डोंट वरी अबाउट इट, we will be soon be having separate regulations of medical devices. Because of K.L. Sharma ji's leadership, finally in 2017 we had the medical device rules which were published, जो currently under implementation है. और जो low risk medical devices हैं वो इस साल से तकरीबन 3-4 हज़ार medical devices हैं जो कि under licensing regime आ गए हैं, और by April जितने भी high risk medical devices हैं वो अगले साल आ रहे हैं. तो medical devices जो उनसे होते हैं वो 7 categories में होते हैं. 7 categories are consumables and disposables. Things like, even you can say you are having a tongue suppressor, even that's a medical device. A wheelchair is a medical device, a stretcher is a medical device. Anything used for medical purpose is a medical device. Or it can be an equipment, or it can be electronic. Electronic can be, again, in different categories. You can have a large electronic like an MRI or a CT scan machine. Or you can have a mid-size equipment like an ultrasound machine. Or you can have a home consumer electronics like a thermometer or a BP instrument. Or you can have a software or a wearable device on your phone. So even that's a medical device. Or these can be implants, or these can be instruments, or these can be for IVD testing like for COVID testing. 2019 में नीति आयोग ने रियलाइज करा कि ये समस्या बड़ी गंभीर है, और उन्होंने एक नया लॉ के लिए एक बिल ड्राफ्ट करा. उनकी इंटेंशन थी कि लॉ सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो CDSO से हट के निकले, और CDSO का इनिशियल पार्ट शुरू में हुए और बाद में वहीं से वो कार्व आउट हुए. और वो फार्मासिस्ट नहीं बल्कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग रेगुलेटर्स लेड हुए. और उसमें जो सुविधा होनी चाहिए दैट शुड बी ऑफ रिस्क प्रोपोर्शनेट डीक्रिमिनलाइज प्रोविजंस टू इनकरेज इनोवेटिव एक्सेस. मेडिकल डिवाइसेस ऐसे हैं कि हर महीने ही मैन्युफैक्चरर्स रैपिडली, जैसे आपने देखा मोबाइल फोन में हर साल नए फीचर्स बनते हैं, ऐड होते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है. मेडिकल डिवाइसेस में इतनी फास्ट चेंजेस होते हैं, और अगर वो ड्रग एक्ट के बीच में रहेंगे, आप देख के चलिए कि जब कोविड आया था, लॉकडाउन क्यों हुआ था? लॉकडाउन इसलिए हुआ था क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे कंज्यूमर्स के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने के लिए हमारे को टाइम चाहिए था. और 3 महीने में जो इंजीनियरिंग टैलेंट था वो सामने आया. कार मैन्युफैक्चरर्स, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, सब लोगों ने, गारमेंट एक्सपोर्टर्स, सब लोगों ने मेडिकल डिवाइसेस बनाने शुरू करे उन 3 महीनों में, ताकि कोविड से लड़ाई हो सके और लॉकडाउन हटाया जा सके. ये सब कुछ संभव हुआ. लोगों ने वेंटिलेटर्स तक बनाए 3 महीने में, लेकिन अगर ड्रग एक्ट में ये वेंटिलेटर होते तो ये 3 साल में नहीं बन पाते. अभी रिसेंटली 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक नया बिल ड्राफ्ट करा है, जो उनकी तमन्ना थी कि ये मॉनसून सेशन में पेश करा जाए. लेकिन हम मंत्री जी से मिले और उनको हमने दरखास्त करी कि ये जो बिल है ये कंसल्ट नहीं करा गया हमारे को, इसलिए बिल को रोका जाए और रिव्यू करके रीड्राफ्ट करके सामने पेश करा जाए.
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, पेशेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक अच्छा बिल बने जो सिंपल होए, इम्प्लीमेंटेबल होए और ड्रग से अलग हटके होए। तो जो बिल में हमने क्या कमियां देखी, सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पर हमारे देश को चाहिए एक नेशनल रेगुलेटर, क्योंकि ड्रग में भी हमने ये प्रॉब्लम देखी है कि कंट्री में हमारे 32 रेगुलेटर हैं। हर स्टेट का रेगुलेटर जो होता है वो लाइसेंसिंग देता है, और डिफरेंट स्टेट्स में लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट तरीके से होती है। इसलिए आप देखते हैं कि दवाइयों की जो क्वालिटी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। ये गलती हम मेडिकल डिवाइस में नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी कंट्री में एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, और जो सेंट्रल रेगुलेटर है जैसे फूड सेफ्टी में होता है वो नेशनल रेगुलेटर होए और वो सुपरवाइज करे स्टेट रेगुलेटर्स को। स्टेट रेगुलेटर्स शुड बी अकाउंटेबल टू द नेशनल रेगुलेटर। और जो रेगुलेशंस हैं, जो इम्प्लांटेबल डिवाइसेस हैं, पेसमेकर हुआ, उसके लिए नेचुरल रेगुलेशंस टफ चाहिए, हार्ट वाल्व के लिए रेगुलेशन टफ चाहिए। लेकिन कोई व्हील चेयर बना रहा है या कोई बैंडेज बना रहा है, उसके लिए इतनी टफ रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही दुनिया में होती है। और जो पेनल्टीज हैं, अगर कुछ गलती भी हो जाए, व्हील चेयर का पहिया निकल गया और पेशेंट नीचे गिर गया, ठोकर खा के उसका सिर पटरी से बर्स्ट कर गया, डेथ हो गई पेशेंट की, तो आप भी कहेंगे कि जी डेथ इज अ डेथ, चाहे व्हील चेयर से हो या मेल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट वाल्व से हो, तो मैन्युफैक्चरर को तो पेनल्टी पड़नी चाहिए। लेकिन एक लो रिस्क डिवाइस है, एक हाई रिस्क डिवाइस है, अब उसमें अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं करी गई, पेशेंट ने पहिए को टाइमली उसके बेरिंग्स चेक नहीं करे या बोल्ट को उसने टाइट नहीं करा हुआ, तो उसमें मैन्युफैक्चरर की क्या गलती है? दुनिया में कहीं पे भी जो लॉज होते हैं हमारे, वो इस तरीके से पालन नहीं करे जाते कि लोग मैन्युफैक्चरर को डरा के धमका के। आपने भी देखा है, आप गाड़ी चलाते हैं, अगर ट्रैफिक का चलान आपका हो रहा है एज अ कंज्यूमर, रेड लाइट या ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आपकी गाड़ी रोल करके थोड़ी सी आगे पहुंच गई है और पुलिसमैन आपको तंग कर रहा है, तो उस लॉ का क्या फायदा विच लीड्स टू करप्शन? लॉ वो है जो हमारे को डिसिप्लिन करे, सबक सिखाए और एक अच्छा हमारे को नागरिक बनाए। मेडिकल डिवाइस ड्रग से ये भी अलग है कि जो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, हैज टू बी ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। ये नहीं कि आपने जो दवाई खरीदी है, जब तक दवाई फैक्ट्री बनी थी, वो तब तक उसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए। आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई अल्ट्रासाउंड मशीन आपके ऊपर यूज हो रही है, उसकी जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है, कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो एनालाइज कर रहा है आपके टेस्ट को, वो कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर वो सही रीडिंग नहीं देगा तो डॉक्टर भी गलत दवा दे सकता है या गलत डायग्नोसिस कर सकता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खाली मैन्युफैक्चरर की नहीं होती है, अनलाइक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, इसमें डॉक्टर कैसे यूज कर रहा है, ठीक तरह उसने यूज करा कि नहीं करा, वो ट्रेंड है कि नहीं है, स्किल्ड है कि नहीं है, वो भी चीज़ भी देखने की जरूरत है। हॉस्पिटल ने मेंटेनेंस करी कि नहीं करी, जो आप कंज्यूमर हैं, आपने टाइमली अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कराया कि नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो फॉल्स रीडिंग होएगी, आपकी दवाई का डोज गलत होएगा, तो आपको एंग्जाइटी होएगी। ये सारी चीज़ें उससे लिंक होती हैं। और इवन रेगुलेटर नीड्स टू बी अकाउंटेबल। रेगुलेटर खाम खाली डंडा घुमाना नहीं है, even he needs to be accountable to the public and to the government in ensuring that safe medical devices are available to the public. और जो सारी सोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑडिट की तरह, इंस्पेक्शन की तरह नहीं होनी चाहिए, और एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात होनी चाहिए। और सूडो मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना चाहिए कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे आते हैं, लोग पैक करके बेचते हैं एज इंडियन प्रोडक्ट, वो चीज़ डिसअलाउ होनी चाहिए। और जो इंजीनियर्स हैं उनका काम होना चाहिए रेगुलेट करना, ना कि फार्मासिस्ट। अगर हम जेल का डंडा घुमाते रहेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सामने नहीं आएगी, और हम जो 70-80% जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी वो रहेगी, उससे कोई फायदा नहीं है। बेटर ये है कि देखा जाए दुनिया में जहां पर जेल का डर नहीं होता, वहां पर कैसे कंप्लायंस होता है। तो उस तरीके से कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से अगर हम काम करेंगे तो बेहतरीन क्वालिटी बनेगी और कंज्यूमर को बेनिफिट होएगा। ये चीज़ भी गलत है कि जो लॉ में प्रपोज करा गया कि जी ओवरसीज मैन्युफैक्चरर की इंस्पेक्शन नहीं होगी और इंडियन मैन्युफैक्चरर की इंस्पेक्शन होगी। तो इसमें जो ओवरसीज मैन्युफैक्चरर है उनको क्या एडवांटेज है इंडिया में फैक्ट्री लगाने का? एक स्विस कंपनी है जिन्होंने मेरे को फ़ोन करा
और बोला कि मैं इंपोर्ट भी करता हूँ, इंडिया में बनाता भी हूँ बॉम्बे में, मेरे को क्या एडवांटेज इंडिया में बनाने के लिए अगर ये लॉ सामने आ जाएगा। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि हम ड्रग नहीं है, हम केमिकल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं कि आपने एक कॉफ सिरप का एक चम्मच बाहर निकाला, उसको आपने टेस्ट करा, अगर वो चम्मच ठीक है तो बोतल ठीक है, अगर बोतल ठीक है तो पूरा बैच ठीक है, बैच ठीक है तो पूरा टंकी जिसमें बना था वो ठीक है। हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, असेंबल होते हैं, जैसे गाड़ी असेंबल होती है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, गाड़ी बनाने वाले से भी गलती हो सकती है। अच्छी कंपनी जैसे टोयोटा भी है, मारुति भी है, वो भी बताती है कभी कभी कि हमारे से एक बैच में गलती हुई है, प्रोडक्ट रिकॉल करती है और वो फ्री में वो रिप्लेसमेंट करती है। मेडिकल डिवाइस भी इसी तरीके से होते हैं, अगर गलती कभी हो भी गई तो सुधारने का मौका मिलना चाहिए मैन्युफैक्चरर को, ना कि स्ट्रेट अवे उसको फांसी लगाने वाली बात होनी चाहिए। तो जैसे पानी और तेल मिक्स नहीं हो सकते, वैसे भी डिवाइसेस ड्रग्स की तरह नहीं होते, और कई कंट्रीज में अलग से रेगुलेट होते हैं, यूरोप में, कनाडा में, जापान में, ब्राजील में। तो हमारा भी जो देश है, हम बात करते हैं कि एस्पिरिंग नेशन है, मॉडर्न है, तो इस तरीके से हमारे को एक मॉडर्न लॉ की जरूरत है। जो पार्लियामेंट्री हेल्थ कमेटी, वो भी हमारी मांग को सपोर्ट करती है और उन्होंने भी सरकार को यही दरखास्त करी है कि जो लॉ है अलग चैप्टर की जगह बल्कि सेपरेट लॉ होना चाहिए, और जो लाइसेंसिंग रिजीम है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के ये लोग उसमें शामिल थे, काफी डॉक्टर भी थे, लेकिन अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस दे ऑल वर यूनानिमस इन सीकिंग दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज स्टिल रिव्यूइंग दिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इंपॉर्टेंट टाइम है कि सारे स्टेक होल्डर्स टीम वर्क से काम करें, और जैसे हमने टीम वर्क से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करके कोविड को हराया, इसी तरीके से हम अपने आप को टीम वर्क से सरकार से दरखास्त करके और पार्लियामेंट में दरखास्त करके अलग लॉ की मांग पेश करें। थैंक यू। Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much. In fact, we are very, very grateful for these inputs. हम उम्मीद करते हैं, कई प्रश्न आ गए हैं लोगों के बीच में, और प्लीज आप लोग रुके रहिए, आपको मौका मिलेगा। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर केएल शर्मा, and you all know about him and his the kind of contribution to the country as a former bureaucrat. I would request now our chief guest to come in, KL Sharma ji, to give his address as the chief guest on the occasion, on the topic of why there is a demand from the consumers and why there's a need for a demand for the consumers to have an exclusive law for medical devices. Mr. KL Sharma ji. Thank you, Bajon. Thank you very much for associating me, for inviting me. First of all, let me congratulate the organizers. A webinar a week, and that too for 25 years. I think it's a stupendous task. You are doing a wonderful job, and you are taking all topical issues into consideration while selecting your webinar topics. And I also want to congratulate Aware Consumer. You are doing a yeoman service to the public and the society at large. And particularly because I have been a reader of this for a few years after being associated with Bajon. And I've found that there is a substantial improvement in the quality of the publication over a period of time. So congratulations. Before I come to the specific question, let me briefly touch upon a few issues. The Medical Devices Policy 2023 and the National Health Policy of 2017. If I say that the documents, if we are to trust the words that have been used in those documents, they have ticked all the right boxes. And if these ideas are honored, perhaps we will be able to drive at the speed Rajiv Nath wants to be there on the express highways.
from access to universal availability, quality, patient centricity, preventive and promotive health, research and innovation, robust regulation, capacity building, training, skill development, everything is covered. That was the good part of the policy documents, but I think there are also problems. The problematic is essentially in terms of the interventions that happen with regard to the policy implementation. Generally, all policies are as good or as bad as their implementation is. The impact is the most crucial part. Even before these policies were kind of operationalized, they have been punctured. The two decisions that had been taken by the government, one in terms of the permission granted for the second-hand refurbished equipment to be used, and the second in terms of the restatement or rehashing of the existing drug law. I think they undid all that good work that was done in terms of the policy for which I thought the government deserved to be criticized. तो जो दो मुद्दे हैं जिसमें बेसिकली जिसने नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी और नेशनल हेल्थ पॉलिसी को पंक्चर कर दिया है, एक तो मुद्दा है जो हमने पुराने सेकंड हैंड इक्विपमेंट को बाहर से रिफर्बिश करा हुआ इक्विपमेंट को यहाँ यूज करने के लिए मांगा है, अनुमति दी है, उससे मेक इन इंडिया का अनमेक इन इंडिया हो गया। और दूसरा जो नया कानून का बिल बनाया गया है वो तो रिहैशिंग है, उसमें कोई नया मुद्दा आ नहीं रहा है कोई एज फार एज द मेडिकल डिवाइसेस आर कंसर्न। ऑफ कोर्स जहां तक दवाओं का सवाल है, मेडिसिन का या ड्रग्स का सवाल है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है, बट मेडिकल डिवाइसेस के लिए वो एक अच्छा अध्याय नहीं है, एक अच्छा रेगुलेशन नहीं है, एक अच्छा लॉ नहीं है। पॉलिसी में एक और बड़ी जो आवश्यकता होती है वो ये होती है कि पॉलिसीज फर्म होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसमें बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर हमने एक पॉलिसी 2023 में बनाई है तो उस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए एक हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और विजन्स को पूरा करने के लिए एक क्लियर कट इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे पास वैसा इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं है तो हमारा सक्सेस होना स्वाभाविक नहीं। जहां तक आज के विषय है स्पेसिफिक इशू ऑफ द सेपरेट लेजिस्लेशन, तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि एक तो हमारा जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन एक लेवल का लेजिस्लेशन होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके चलें और एक पूरी फ्रेमवर्क को तैयार करके चलें तो हम एक अच्छे आंसर पर आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा राजीव ने कहा, एम्फेसाइज किया, बार एम्फेसाइज किया, अगर रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होती है तो पब्लिक ट्रस्ट और गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पर भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। वीक रेगुलेटर्स जो है वो पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करते हैं। लॉ जो होता है वो एक पॉलिसी की एक्सटेंशन होती है और ये उस पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर ये उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो वो लॉ ठीक नहीं है, अच्छा लॉ नहीं है, उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। राजीव ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि मेडिकल डिवाइसेस जब से डिफरेंट है। इंग्लिश में भी बोलिए सर। तो okay, you want me to bilingual, huh? We have participants who don't understand Hindi also. Okay, so right. To balance it, because Professor Ramaiah should also be able to understand, who has joined us midnight from US. He is looking lost a bit, so tell a few things in English also. Great. So what I was saying in nutshell is that as far as the legislation is concerned, we have a parliamentary legislation, we have a subordinate legislation. The entire framework for regulating medical devices and drugs, etc., they have to come through those two instrumentalities at our hand. Law is an extension of the policy and it has to be consistent with our long-term objectives. If there is a gap between
between what is proposed in the policy and what is proposed in the law, perhaps the law loses its legitimacy. Medical devices are distinct category, right from their development to the end use. At every stage, they have a different kind of a requirement. Though the end objective may be the same, that is the healthcare and well-being of people, परंतु उसमें अंतर है और उन अंतरों को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते. We can't say negate all those differences. Those differences have to be taken into account, and the framework that we put in position for regulating have to necessarily take into account the differences between the two. इसलिए जो मेडिकल डिवाइसेस की रेगुलेशन के लिए है, अलग एक तंत्र बनने की आवश्यकता है और उस तंत्र में पूरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए. द मैकेनिज्म शुड हैव ऑल काइंड ऑफ एक्सपर्टीज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ द मेडिकल डिवाइस. ये क्या एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में होना चाहिए, 2 पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में होना चाहिए, ये एक थोड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. दोनों ही तरीकों से इसको कवर किया जा सकता है. अगर एक अच्छा लेजिस्लेशन, सिंगल लेजिस्लेशन भी बनता है, उसमें प्रॉपर चैप्टर होते हैं, प्रॉपर कैलिब्रेशन होती है, that can also take care of it. But if we are going to kind of bring out a law which will create confusion, that it might be better to have 2 separate laws, distinct laws, one for medical devices and the other for the drugs. So the situation as it is prevailing as of now has been captured elaborately by Rajiv, but I'll tell you what could be the possible way forward. So there are points that have been identified in the policy. We need to take comprehensive steps in a calibrated, in a structured manner to take all of them forward, whether it be the capacity building of regulators, manufacturers, educational institutions, development of the expertise and specialization in different areas. In addition to that, we have to necessarily delayer regulation. While we cannot have governmental regulators all over the country, different regulators for the same products, we need to have a centralized system, as pointed out by Rajiv. I support that fully. But at the same time, there is a need for delayering. Everything need not be done by the government. Government is not the best instrumentality for regulating. जहां तक रेगुलेशन का प्रश्न है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि वो उसके लिए बेहतर नहीं, सबसे बेहतर नहीं. उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं. खामियां, सबसे बड़ी जो खामियां मैंने 4 दशकों में देखी है, they have been in terms of the resources that are available and could be done. So while I speak about delayering, I am in fact hinting at instrumentalities such as this IC-MED coming up and others also. But in addition to that, we have to also address the concerns relating to the fake certifications that are coming into the countries. And for that, there will also be a need to enter into mutual recognition agreements with foreign countries at the bilateral and the multilateral levels. And Anil Johri ji has been doing a good job on that. And I think if he has time, sometimes he will be in a position to tell that. Accreditation, etc., all these things are very important. And post-marketing surveillance in case of medical devices even assumes a higher significance as compared with the drugs. तो उसका भी एक robust structure बनना चाहिए. तो हमारे पास इसका structure है, वो थोड़ा ढीला ढाला है. MVPI का structure अभी इतना मजबूत नहीं हो पाया. वहाँ भी resources की कमी है और वहाँ भी resources की कमी मुख्यतः इसलिए है कि क्योंकि वो भी एक governmental structure है. इसके अलावा जो बड़ा important मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि जब भी हमें लॉ बनाना है, जब भी हमें कोई इंस्ट्रूमेंटलिटी तैयार करनी है, उसमें सारी consultations should not be restricted within the governmental structures. Like when this bill was being drafted, the entire consultation was restricted within the governmental structures largely. We have to have external input necessarily, and unless that external input is obtained, the enrichment of the decision matrices is not possible.
in addition to that, we have to also take into account the additional resources that have become available to us, like artificial intelligence and things like that. So all these things, if we can put them together in a framework, and if we can provide for a broad structure for that in the law, and then detail that in the rules or the regulations, perhaps that would appear to be the way forward. So to sum up, what I say is that we have, I think, been in a position to identify what the problem is, what the solutions are. It's only a question of structuring the expressway in such a manner that we can avoid the accidents to the maximum possible extent and zoom on that at the speed at which we want to go ahead. So with these words, I thank you once again for associating me, and also congratulate once again you for so many activities that you are doing. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sharmaji. It was just beautifully summarized, and as a great leader, you have always been to guide us at every step, where quality and safety of the patients is paramount. We cannot compromise on that. And ये कहते हुए हम लोगों को ये भी समझना होगा कि कैसे हम लोग बैलेंस करके लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, जो आज आपने वो बीड़ा लिए हैं हरियाणा से, you have started working towards bringing reforms in the governance, which is a great work which you have started. I want to congratulate you. I also want to tell you that when you congratulated us about the Aware Consumer Magazine's quality improvement, you know, the most important thing is we have a great team. And I'm very happy that even on a Sunday at 11 o'clock, the team leader, Payal, has joined us. So Payal deserves all the recognition which you have given. I want to recognize her great work in improving the quality of the magazine. And I can see Binaji shaking her head, Praful Bhai shaking his head, because as part of the board or the editorial board of the magazine, we are all trying our best how to strengthen Payal's activity and make the magazine a household name in the country. तो ये हम लोगों का प्रयास है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे. Before I request Ramaiah ji to start the conversation in terms of asking questions with the keynote speaker and the chief guest, I would call upon Dhananjay ji. Dhananjay ji, I could not recognize you for a few minutes. हम सोचे ये गेरुआ वस्त्र पहन के कौन साधु महाराज बैठे हैं हमारे बीच में. थोड़ा समय लग गया, लेकिन as you have been always supporting us in taking healthcare forward, and as a writer, as an author, as a media person, always talking about healthcare, I will start the conversation from you. और हम हर एक व्यक्ति को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनको भी जो भी प्रश्न पूछना है, आप प्लीज हाथ उठाइएगा, हम आपके पास जरूर आएंगे. We will start with Dhananjay ji. Dhananjay ji, please give your comments, and if you have any questions to ask to the two eminent speakers, please start the conversation. I would like to do it from you because I'm seeing you after a long time. You are looking better. You're looking good. I think you are radiating. ये गेरुआ वस्त्र आपको सूट कर रहा है. Please go ahead. सर, सबको प्रणाम मेरा, आपको, राजीव नाथ जी को, और जो हमारे सारे वेटरन्स हैं सबको मेरा प्रणाम. मुझे मन्ना जी ने कहा था कि थोड़ा सकारात्मकता पर आप कुछ बोल दीजिएगा, है इंट्रिकेसी नहीं है. तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो राजीव नाथ जी है ना, वो सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है, एपिटमी ऑफ पॉजिटिविटी. ये मेक इन इंडिया के सबसे बड़े चैंपियन है, लेकिन इनको झटके लगते रहते हैं. कभी इनकी आशावाद जो है आसमान छूने लगता है, तो कभी निराश हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने सकारात्मकता का दामन नहीं छोड़ा. और मुझे लगता है कि ये चैंपियन अलग लॉ भी बनवा लेगा मेडिकल डिवाइस के लिए, और ये इंडिया
5 ऐसे देशों में शुमार हो जाएगा कि हम जो है मेडिकल डिवाइस का एक्सपोर्ट करेंगे। एक सवाल है जो पूछना चाहता हूँ, ये अभी सर बिजॉन जी ने कहा कि वो सेफ्टी जो पेशेंट का है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अभी मैं एक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के एक नामी कंपनी से वालों ने मुझे बुलाया, बोला लेकिन मेरे नाम से खबर न लिखें। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 1000 लैब होंगे, डायग्नोस्टिक लैब, उसमें 2-4 ही क्रेडिबल है, क्योंकि वो सेकंड हैंड इंस्ट्रूमेंट के यूज का जो मसला है ना, उन्होंने कहा कि इससे रेडिएशन इतना हो रहा है कि किसको कैंसर हो रहा है ये भी पता नहीं। तो इस पर कुछ बोले, और आगे मैं कीमती समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता। थैंक यू। तो शर्मा जी और राजीव नाथ जी, प्लीज satisfy the question asked by धनंजय जी। धनंजय जी नमस्कार। प्रणाम। जो आपने प्रश्न बोला है बड़ा इम्पोर्टेंट, इसलिए हमारी जो मतलब कि रेगुलेशंस जो से हैं नए इंस्ट्रूमेंट के लिए तो खैर बहुत जरूरी है, सेफ्टी के लिए, कैलिब्रेशन के लिए, लेकिन जो प्री ओन्ड इक्विपमेंट है या जो पुराना हो गया इक्विपमेंट, आपने नया इक्विपमेंट लिया, उसके ऊपर शुरू में मैन्युफैक्चर की 1 साल की वारंटी होती है। उसके बाद आपके हित में है कि आप एएमसी करिए मैन्युफैक्चरर के साथ। एएमसी भी रीजनेबल प्राइस पे होनी चाहिए, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, तभी लोग एएमसी कराएंगे। अगर बहुत महंगी होगी तो एएमसी अवॉइड करेंगे। लेकिन एएमसी कराना बहुत जरूरी है, ताकि जब तक वो इंस्ट्रूमेंट का पालन हो रहा है, यूज हो रहा है, तब तक उसकी जो रीडिंग है, क्वालिटी है, वो सही होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं होएगी तो नेचुरल बात है कि डायग्नोसिस गलत होएगा, रिपोर्ट गलत होएगी, और अगर रिपोर्ट गलत होगी तो डॉक्टर की जो दवा का जो डोसेज है वो भी गलत हो सकता है। तो जो बात हो रही थी अभी कि जो हम कंट्री ने अलाउ कर दिया है, जो प्री ओन्ड इक्विपमेंट है उसका इंपोर्ट अलाउ कर दिया है, वो बहुत ही एक गलत दिशा में कंट्री जा रही है, क्योंकि कई कंट्रीज में ये अलाउड नहीं है। चाइना, इजिप्ट, वियतनाम, थाईलैंड ये नहीं अलाउ करती हैं कि सेकेंड हैंड इक्विपमेंट इंपोर्ट हुए। लेकिन जाहिर है कि कल को मान लिया कि हमने सेकेंड हैंड इक्विपमेंट इंपोर्ट बंद भी कर दिया, फिर भी इंडियन इक्विपमेंट भी पुराना हो सकता है, वो भी दोबारा बिक सकता है, जैसे गाड़ी दोबारा बिकती है। तो वो तभी बिक सकती है जब तक जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर वही सर्टिफाई करे, वही कैलिब्रेट करे, और वही उसका सर्टिफिकेट दे उसकी यूजेबिलिटी का। तो जो एक नए प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती है, बैच क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, प्री ओन्ड इक्विपमेंट में बैच वाली बात नहीं होती है। हर इक्विपमेंट हैज टू फॉलो रेगुलेशंस। Every equipment has to be recalibrated and meet the safety requirement, and that needs to be defined in a robust law. This is missing also in this proposed bill. Very good, well said, well said. अरे एक लाइन शर्मा जी, मन्ना जी के लिए, एक लाइन मन्ना जी के लिए। मुझे कहीं जाना है सर, इरोज होटल, तो मैं मन्ना जी के लिए बोल देता हूँ। एक जगह मुझे अभी बोलने के लिए बुलाया गया था, तो मैंने कहा कि मैं अभी सेहत के अमृत काल से गुजर रहा हूँ, 64 साल की उम्र में सेहत के अमृत साल से गुजर रहा हूँ। सकारात्मकता की यह अलख मन्ना जी ने जगाई है हम में। मन्ना जी ने हमें इतना सकारात्मक बनाया है, इसलिए मन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। thank you, thank you. Sharma ji, you want to say something to Dhananjay ji before he goes for his beautiful lunch to Eros Hotel? धनंजय जी नमस्कार। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा रेज किया है और राजीव जी ने इसको काफी अच्छे से कवर भी कर लिया है। ये एक बड़ी समस्या है और इससे अलग भी समस्या है जिसके बारे में भी बैजॉन ने काफी काम शुरू में किया है। एक और एक्ट भी बना है पर उसमें भी अभी खामियां हैं, तो आज के विषय से थोड़ा सा वो हटके है, परंतु आपने जो पॉइंट रेज किया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको भी इन रेगुलेशंस में ध्यान में रखा जाना जरूरी है।
Both good, both good. Professor Ramaiah, you have to unmute and come. You have to unmute and come. If you have any questions, please ask to the eminent speakers. Yes, thank you so much. I really enjoyed the two talks. First of all, my comment to Rajiv Nath. I met him 3 years ago and tried to convincingly talked about the rare diseases at that time. Was very understood. It took time to understand, realized the importance, actually included in the draft of the medical device policy, latest one. Thank you very much, Rajiv Nathji. Now I have a question to Sharmaji. We all know that India is the signatory for the UN SDG goals. One of the things it says that universal healthcare is not complete until you include the rare disease as part of it. So my question to you, sir, do you suggest there should be a special language in the policy draft for medical devices? Sharmaji. Thank you very much. Thank you very much for raising this important question. I think as far as rare diseases are concerned, this is one area on which maybe a decade back there was only very little talk, but of late a lot of importance has been given to it even by the governmental structures. And as you know, rare diseases impact only selected and smaller population. So therefore, earlier the priority was not to that extent. But because it is rare, should be no reason for ignoring it, and it should be covered comprehensively in this policy as well as in any future policy that are made. That's what my short answer to your question is. Very good, very good. And we will work towards that, Professor Ramaiah. You keep patience. Patience will always help us to reach our goal. And I'm sure we all have that characteristic, and we'll keep working towards that. Having said that, I would now come to some of the comments which have been given in the chat box. So I will request Somnath Basuji to kindly come, unmute and come and put on the video to answer, to ask the questions to the eminent speakers. Somnath Basuji. Are you there? Okay. I will immediately go to now Sohail from the Indian. Oh, you are there. Somnath Basuji is there. Okay. Somnath ji, yes, please. Nice to have you with us. Great to see you. Thank you. Namaskar. 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 How is Vizag treating you? Vizag is okay, very nice. Here, AQI is low than Delhi, at least. Very good. It is only 70 to 100, sometimes sobering. At the time of the Diwali, it was increased, but after that, it again lowered. Although there are a lot of PSU industries here, almost 50 PSUs are here. Very so, good. Sir, very nice that you have appreciated my comments. I mean, you have welcomed me to talk on these issues. Yeah, I found that these MVPI programs can be boosted up if there is a backing of the rule. So in our rule MDR 17, there is a rule that for clinical investigation is required for the new medical devices. It is just in line with the new drug introduction in the country. Okay, so it is in the same line, same theme, it was done. But for the existing medical devices, at least for the B, C, and D category, in my chat box, I have mentioned A, but there should not be A. A is the lowest risk category, so it should be D1. B, C, and D categories of the medical device, there can be a provision or some kind of mechanism in the MDR 17 we can introduce right now, as long as the new policy or the new act is not coming into being as a separate act for the medical devices. So that this MVPI and reporting from the consumers and doctors, surgeons, it can be boosted up. That's my thing, sir. सर थोड़ा ब्रीफ में आपका संस्था के बारे में बोल दीजिए सारे पार्टिसिपेंट्स को वाइजैक में जो है. Yeah. Sir, AMTZ, as you know, it is Andhra Pradesh MedTech Zone. यहाँ पर 270 एकड़ लैंड है और इस कैंपस के अंदर
ऑलमोस्ट मोर देन 100 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स है और करेंटली इसमें सबसे ट्रिबिट्रॉन डायग्नोस्टिक्स है और ट्रांसेशिया है एंड एक यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू हेल्थ टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर द हेल्थ टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सिटी इज कमिंग अप और एक हॉस्पिटल 200 बेड का ये भी खुलने जा रहा है और यहाँ पर हमने एक कॉलम ब्लड सेंटर इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। शर्मा जी का प्लान है, हमारा डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी का प्लान है कि ये 13 तारीख तक उद्घाटन हो जाए, लेकिन हम इन द प्रोसेस में है, हो सकता है ये जल्दी ही हो जाएगा एक ब्लड सेंटर। और हमने अभी रिसेंटली एक इंडिया एक्सपो सेंटर बनाया है, उसका कैपेसिटी काफी हद तक है और इन द रिसेंट पास्ट जस्ट 1 वीक बैक हमने 2 इंटरनेशनल प्रोग्राम किया है। एक तो क्लिनिकल इंजीनियर्स फोरम, इंटरनेशनल क्लिनिकल इंजीनियर्स फोरम और दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का हेल्थ टेक्नोलॉजी फोरम। So thank you for calling me and giving me this opportunity. Thank you for joining. And I must tell everybody that ये जो zone है, ये जो complex है, जहाँ medical devices का startups लोग शुरू कर रहे हैं, वो इतने बढ़िया जगह है, इतने बढ़िया रूप से जितेंद्र शर्मा जी कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी वहाँ एकत्रित होंगे और बहुत जल्दी हम लोग एक कार्यक्रम भी करेंगे वहाँ पे पेशेंट्स लोगों को लेकर, ताकि उनको भी पता लगे कि किस ढंग से क्वालिटी को आप पहचान सकते हो और किस ढंग से कम कीमत में अच्छा से अच्छा गुणवत्ता वाला सामान जो इंडिया में बन रहा है उसका कैसे हम लोग बढ़ावा करें और इंपोर्ट को और घटाएं। जो राजीव नाथ जी अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि अभी भी हम लोग 70% डिपेंडेंट है 2 कंट्री USA एंड चाइना। वी हैव टू नाउ मेक द वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन इंडिया in terms of medical devices. So we'll have to work towards that. Without wasting any more time, 3 hands have been raised. Dr. Mrinal Kanti ji, who teaches in Singapore University, please put on your video and unmute and come and ask your question and give a brief introduction about yourself. Dr. Mrinal Kanti ji. Hello everyone. Before One minute. I would like to make a comment on what was put forward by Mr. Basu. Yes, please. I have been talking to the doctors that why the MVPI program is not being robust and not being so effective. So the informal feedback I've been getting is that most doctors, because it's under the Drugs Act, they have a experience of the Drug Act. They don't want to use the Drug Act based system. It's the same problem like you have a car accident. If you will stop to help the person having the accident, you will get involved in a police case. People don't want to get involved in a case. They don't want to make a filing of the report कि ये डेथ हो गई, इंजरी हो गई और कल को पता चला कि मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है, वो डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर पे ब्लेम डाला गया। तो डॉक्टर्स डोंट वांट टू गेट इनटू दैट लीगल झमेला, इसलिए वो फॉर्म भरते नहीं और भेजते नहीं है, इसलिए वो रिपोर्टिंग हो नहीं रही है। तो जब तक एक सिस्टम हम नहीं बनाएंगे जो कि बिना डर के चले कि फांसी नहीं होने वाली है, आप बताइए प्रॉब्लम क्या है, तभी आपका डायग्नोसिस ठीक होएगा, तभी आपको दवा सही मिलेगी, तब तक वो सिस्टम बढ़िया नहीं चलेगा। उस पे एक्चुअली वी हैव टू लिसन टू अनिल जौहरी जी आल्सो who's joined us. We will come to Anil Jauhari ji to give certain solutions to this challenging work which we are trying to do, jahan doctors are feeling shy to report. And it is very important to understand how we can do a voluntary initiative on this. We'll have to understand that. Dr. Mrinal Kanti ji, please come, unmute and come. Okay, very good afternoon, everyone. Can you put on your video? Can you put on your video, please? I am not appropriately. If possible. I mean, I would let it go because I'm in a different. Yeah, doesn't matter. We appreciate. We can understand. Okay. But we always want to see the face of the person because we want to make sure it's a human being, not a robot. I'm not a robot, I guess. That's part of the joke. Anyway, go ahead, please. Okay. The thing is, first of all, I thank both the speakers, particularly Dr. Nath. So he has spoken about some very, very intimate issues that we deal with medical device regulation in India. It's more of a comment rather than a question.
I teach medical devices. I'm a biomedical engineer by training. I teach at the National University of Singapore. And I teach medical device regulation here to students and regulators and whatnot. We talk about FDA, we talk about HSS Singapore, we talk about CE, but we seldom touch on how it's being done in India. Even though India is a huge market, we seldom talk about how medical devices are being regulated in India. It's as an Indian myself, I feel a little sad. I'm really enjoying how the plans are being fanned out. What the two speakers and other speakers have mentioned about the way forward, and I eagerly look forward if I can be of any help. I would be very much eager to help, being an Indian myself, to teach how things are done in various countries. As I mentioned, I teach FDA, I teach SSA, I teach CFDA, CTGA, and all those things. So it's a good step. We have a long way to cover. We have a long way to go, but I guess it's a step in the right direction. Very good. Thank you very much, Dr. Mrinal. I'm sure on the chat box you would have left your email ID and contact details. Our team will get in touch with you. We would definitely like to have you as our resource person in the future on certain areas in terms of bringing in your dimensions on regulatory mechanisms in the healthcare sector. We will definitely like to invite you. Please leave your contact details on the chat box. I would now go to my friend Suresh ji. सुरेश जी, बहुत दिन के बाद आपको दिख रहा है. आप प्लीज वीडियो ऑन कीजिए. कैसे हैं आप? एंड अनम्यूट कीजिए. Suresh, advisor to BHU, Banaras Hindu University, our alma mater, and we have been working together. बहुत दिन के बाद आपको दिख रहा है. You are looking very nice. You are looking thank you. Thank you. Go ahead, Suresh ji, go ahead. See, I have two queries. Actually, I should thank you, Dr. Rajiv, and your team. It was a very good presentation. I got clear in so many issues or questions. The two things that I really wanted to know is that 2 days back I had another webinar where one person from US was there, and we were talking about medical devices, and he told that in US FDA there is outsourcing of regulation, like accreditations like we have in hospitals. So this is voluntary. So my question to this voluntary accreditations, what is the legal status of this? That is first. Secondly, as many people have pointed it out already, how calibrations, as a clinician, I am sitting in the BHU, the calibration of hospitals is never done. So that procedure is not taught even to the doctors or even to our administrators or even. And that is the main problem. That's why we cannot do this post-marketing surveillance. Because first of all, we have to be sure that the instrument given is calibrated and how to calibrate it. So these two things I'm bit like to understand from the experts. Yeah. So, Sharma ji, you want to come in, and Rajiv? Yeah, I'll answer that. Both the questions. Both are very pertinent issues जो आपने raise करे हैं, Mr. Suresh. The first one is Europe introduced many years back the system of third-party conformity assessment to help national regulators use domain experts to audit factories. एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई इंस्पेक्टर होए, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नॉलेज होए, सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होए, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स की भी नॉलेज होए, इंट्राओक्युलर इम्प्लांट्स की भी नॉलेज होए, स्टेरिलिटी की भी नॉलेज होए. तो डोमेन स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं जो कि ऑडिट करते हैं उन फैक्ट्रीज को. तो ये यूरोप ने ये पहला सिस्टम शुरू करा था जो बड़ा अच्छा सिस्टम था. उसके बाद यूएस एफडीए ने रियलाइज करा कि इस सिस्टम में बड़े एडवांटेजेस हैं. तो यूएसए ने भी मैंडेटरी तरीके से तो नहीं लेकिन एक वॉलंटरी तरीके से सिस्टम शुरू करा
जो है MD SAP सर्टिफिकेशन, MD यानी कि मेडिकल डिवाइसेस, SAP यानी कि सिंगल ऑडिट प्लान। तो ये सिंगल ऑडिट प्लान जो सा है, ये कनाडा, US FDA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील की जॉइंट रिकॉग्निशन है। तो एक सिंगल ऑडिट से मैन्युफैक्चरर का जो प्लांट है वो ऑडिट होता है, और जितनी भी ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इन सारी कंट्रीज की, वो ऑडिट में वो कवर होती हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर को बार बार ऑडिट नहीं कराना पड़ता। अब जैसे हमारी कंपनी जो सी है 100 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, अगर हर महीने ही उस कंट्री से ऑडिटर आते रहेंगे तो हमारे क्वालिटी वाले बंदे क्वालिटी देखेंगे कि उन विजिटर्स को देखेंगे, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर वर्क। तो ये MD SAP जो प्रोग्राम था, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया US FDA ने, क्योंकि दुनिया भर में इतनी बड़ी संस्था जो है US FDA, उनके पास भी इतने इंस्पेक्टर्स नहीं है। हम भी अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। 24 सालों में मेरी फैक्ट्री में खाली 3 इंस्पेक्शंस हुई हैं US FDA। लेकिन अब MD SAP सर्टिफाइड हमारी कंपनी है, तो अब उनको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है हमारी फैक्ट्री देखने के लिए। They give us the waiver for inspection when they renew our regulatory approval. So this becomes good for the manufacturer. It also becomes good for the regulator. No, my question is, what is the legal status of it? Legally, something happens, whether he can be prosecuted. Legally, it is recognized. Yeah. US FDA, since it has recognized it, legally it is recognized. So it is giving a waiver. So that is what we have been seeking over here. जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जिनके पास ISO 13485 है या ICMET सर्टिफिकेशन है, उनको सरकार एक वेवर दे, क्योंकि वॉलंटरी सर्टिफिकेशन मैंने दिखाया ना कि इज हायर देन मैंडेटरी। राइट। तो एक मैन्युफैक्चरर जो वॉलंटरी चीज हायर फॉलो कर रहा है, तो उसको एक वेवर मिलना चाहिए इंस्पेक्शन से। तो ये जब तक गवर्नमेंट इसको लेकर आएगी तो अपने आप ही कंप्लायंस बेटर होएगा। No, but whether the form for the violation of law can be prosecuted. Yes, of course. So that law structure should be there now. What will be the punishment and all those things. So that is there in the penal system. Like I mentioned to you, the audit is not there to designed for attacking somebody. Yes. When you're giving a license, that means the person is already compliant. When you're auditing, that means you are seeking the consistency of compliance. Exactly. So अगर कोई खामी देखता है ऑडिटर, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो खामियां मैन्युफैक्चरर एड्रेस करेगा, उसका प्रूफ देगा। जो वो प्रूफ देता है कि मैंने खामियां दूर कर दी हैं, मैंने सिस्टम में ये जो कमियां आपने देखी थी मैंने उसको रोबस्ट कर दिया है, या मैंने ये इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया है उसको एड्रेस करने के लिए, इशू को एड्रेस करने के लिए, तो वो जो नॉन कंफर्मिटी होती है वो क्लोज हो जाती है। इसी से इंप्रूवमेंट आती है, और एक मैन्युफैक्चरर धीरे धीरे अपनी क्वालिटी और जो अपनी संस्था है, सिस्टम्स है, वो इंप्रूव करते रहता है पेशेंट के हित में। Sharma ji, you want to add something? Mr. Kel? John, the only thing I want to add is that when I was speaking about delayering of the regulation, that is precisely what I was hinting at, that we cannot do everything in-house in the government. However robust structures we might put in, the resources will never be sufficient and they will never be proficient enough. Therefore, any law that is made in the future must necessarily also provide for delayering of all these activities. And that's your point. Very important point. Sahuji, you have been raising your hand. Sudeep Sahuji. सर नमस्कार। नमस्कार। मैंने कहा ये ऐसा अनछूता विषय था जिसको कि RJS PBH ने उठाया और आप सबने इसमें सहयोग दिया। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि दिल्ली में एम्स में अभी MRI के लिए 2 साल की डेट दी है, ठीक है? अगर प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए तो तुरंत हो जाएगा MRI। क्या नर्सिंग होम चलाने के लिए डॉक्टर का होना जरूरी है? क्या खुद डॉक्टर संचालक होना चाहिए, या नर्सिंग होम या बड़े बड़े अस्पताल कोई भी व्यक्ति खो? एक बात, हमारे गाजियाबाद में एक जगह पर ही कम से कम 150 डॉक्टर के नर्सिंग होम है, और वो सभी लोग एक्सरे मशीन इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पे पड़ोस में लोग घर भी हैं उनके कि मेरे बगल में नर्सिंग होम है, ठीक मेरे बगल में मेरा घर है। तो क्या उन डिवाइसों का जो दुष्परिणाम है उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है? और एक ग्राहक कैसे जान सके
कि इस डिवाइस का जो है सर्टिफिकेशन हो चुका है, जो प्रोमिनेंट जगह वो डिस्प्ले होना चाहिए। जरा इस पे प्रकाश डालिए। शुक्रिया। Sharma ji, would you like to take that question first? And then I'll go to Rajiv ji. देखिए, जहां तक पब्लिक फैसिलिटी की बात है, वहां पर मैंने पहले भी कहा कि रिसोर्सेज की थोड़ी बहुत ही कमी रहती ही है। इसमें चाहे फिर एम्स हो या दूसरा इंस्टीट्यूशन हो, पर आज के दिन में बाहर भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है और हमें हमेशा पब्लिक फैसिलिटी पर ही डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये एक ऐसा भी हमें इकोसिस्टम बनाना पड़े। तो बाकी ये मुद्दा थोड़ा और विस्तार से चर्चा करने का है, तो इस पर थोड़ा हमें अलग से चर्चा करनी चाहिए। पर मोर और लेस मेरा कहना ये है कि पब्लिक फैसिलिटी के अलावा प्राइवेट फैसिलिटी भी होनी चाहिए और रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, और उसमें जो भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या जो भी उसमें इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सब पूरी की जानी चाहिए। Very good. Rajiv ji, you want to add anything more? I would like to just briefly state that Ayushman Bharat was brought into the country for this particular reason. Public health being very important has got limited resources and limited outreach. So institutions like AIIMS can partner with other organizations and subcontract and use reports of other organizations under the Ayushman Bharat program also, and other schemes like CGHS schemes, etc. Very well said. In fact, साहू जी, आपको मालूम है कि हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लेकर जो काम कर रहे हैं, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो ताकि वेटिंग टाइम घट जाए। यूसी आज हम लोग को ये देखना चाहिए कि सरकारी तंत्र, जिसको पब्लिक हम लोग कहते हैं, पब्लिक सर्विस, और जो प्राइवेट सर्विस है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स पब्लिक सर्विस भी लॉस में नहीं चलना चाहिए, उनका भी उस ढंग से चलना चाहिए कि पब्लिक मनी सही ढंग से यूज हो। तो हम लोग को इस ढंग से काम करना होगा कि वेटिंग टाइम ना रहे और लोगों को सुविधा मिले तुरंत, और इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक हम लोग डेडिकेटेड संडे रखेंगे इसको लेकर कि कैसे हम लोग आयुष्मान भारत के तहत या दूसरी हेल्थ पॉलिसी है, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो और सारे ही लोग कवर। जी जी जी, तो बहुत ही बेहतरीन होगा। 10 लाख तक तो कम से कम कवर ही हो जाए, इस तरह की पॉलिसी कुछ आ जाए। शुक्रिया। या इस पे यू नो द मिसिंग मिडिल क्लास के बारे में बातचीत चल रही है कि कई लोग जो वो लोअर लेवल पे नहीं आ रहे हैं, जिनका आयुष्मान भारत के तहत उनको सुविधा नहीं मिल रहा है, जिनको ESIC के सुविधा नहीं मिल रहा है, जिनको CGHS के सुविधा नहीं मिल रहे हैं, और जो लोग खुद खरीद पा रहे हैं इंश्योरेंस कवर, हेल्थ कवर, लेकिन देयर इज अ ह्यूज मिसिंग लिंक, आई मीन मिसिंग मिडिल क्लास, जिनको भी हम लोग को देखना चाहिए। उन पे चर्चा हो रही है, रेगुलरली डिस्कशंस हो रहा है। हम लोग आएंगे बहुत जल्दी कुछ न कुछ आउटकम लेकर, आंकड़ों लेकर, जो जिससे जैसे जो आप उदाहरण दिए हैं कैसे एम्स में वेटिंग टाइम घटा सकें, उस पे हम लोग एक चर्चा शुरू कर रहे हैं। बहुत देर से सोहेल जी जो गुवाहाटी में रहते हैं, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स में हैं, सोहेल जी आपका पेशेंस हम मान लिए हैं। यू आर द फर्स्ट वन टू रेज द हैंड। आई एम सो सॉरी दैट आई कुड नॉट कम टू यू अर्लियर, बट सोहेल जी द माइक इज योर्स। आपका प्रश्न प्लीज पूछिए। थैंक यू विजन सर। सो जितने भी पैनलिस्ट लोग हैं, सो आई मेट विजन सर वेरी फ्यू डेज बैक, और आई एम वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड वेरी रेवोल्यूशनरी person whom I have met, and I'm not trying to put him up, but it is true with the age which he has and his, you can find it out from his shirt which he's wearing. So he's a very, very active person. So secondly, Sunday kabhi मैं आता नहीं, but विजन सर ने ये दिया था, जो लिंक दिया था, it was very important, and it was going through me as a businessman, as a patient, as well as a person which who belongs to Northeast. So to the esteemed panelists, I have few points to tell and discuss before I share with you something very important. First is, I have been working for healthcare
I'm studying. I'm a very small person here. So first thing is to all the sirs out here. जब हम registration करते हैं एक diagnostic center का, वो जब निकल के जाते हैं any part of India, his diagnostic report is not accepted by the doctors in many A, B, C category towns when the patients come. There is where the patients come to know कि उनका accreditation नहीं है. The simple question here is, and we can work together. Indian Chamber of Commerce के साथ हम लोग काम कर सकते हैं एक साथ मिलके, and I need all of your support. The thing is, जब registration होता है एक diagnostic center का, उनका structure जो building होगा वही दिखाया जाता है. The first question is this: no, the most important thing which I feel कि वो लोग क्या सामान खरीद रहे हैं, वो certification लिया है नहीं, government certification लेने के लिए, NABL accreditation के लिए, it is not a huge money. उन लोगों को अगर business करना है वो 40-50 हजार को accreditation वो लिया हुआ है नहीं, that's the main question. Why NABL kind of association or NABL quality control council has to look for accreditation people as business? It is compulsory. जो मैं feel करता हूँ, if you want to start a business, they have to do the registration, and while doing a registration, ये accreditation का काम होने के बाद ही वो business चालू कर सकते हैं, which is not there. I'm talking from Northeast point of view. Number one. Number two, सबने बोला था calibration यहाँ होता तो है ही नहीं. Northeast is pretty backward, and I want to work for Northeast. और install करने के बाद calibration का क्या system है, awareness ही नहीं है. Patients का तो मेरा तो awareness ही नहीं है कि अभी before this someone asks कि patient अगर कहीं जाएगा उसको क्या ये machine के बारे में क्या, I'm not technical. So patient का awareness, mass awareness India में है नहीं कि where I'm going to and what kind of quality, जो डॉक्टर ने बोल दिया वही मान लिया. That's the first point. And please give me some 1 minute more time. Second, the doctor community को साथ लेके आके उनका confidence लेना very important है, because brand is not the solution. We have many entrepreneurs who are coming up working on the B and C category, C and D category, and as sir has already mentioned कि 30-40% हम लोग आज produce कर रहे हैं. Why not A and B categories also linked with major research institutes? इतने बड़े-बड़े हम लोग के institutes है when it comes to research or medical, ICMR है, इनको uplift करके वो community को why not? अभी जो last question था कि public sector में हम लोग का लोग नहीं है, they are ready. When it comes to the young blood of the country, they are ready to go and earn business going to the penetrating inside India, because major city में major companies है, big hospitals है, वो कर नहीं पाएंगे. It's a fact. So उनको opportunity देके वो जो B town C town में उनको वो facility scheme जो भी हो देके उनको quality, obviously quality maintain करना, वो करना हम लोग को शायद चाहिए. देखिए मैं एक example दूंगा. No, Sohail, just one more point. Yeah, last 2 points. So IPL जब कोई खेलता है, इंडिया का 5 प्लेयर को हम लोग देते हैं चांस. I am a sportsman. I am a national badminton champion earlier. और 5 प्लेयर इंटरनेशनल को देते हैं. 5 प्लेयर जो यहाँ हम लोग का स्टार्टअप है, इंडियन guys, they should get that opportunity, not the business community who is in force. Last sir, in ILAC जैसे कि institute है, international recognition देते हैं. We have to come to that state wherein Indian association they approach people from outside, approach हम लोग को association इनके साथ चाहिए, because we are a big business place. Or last point, Bijan sir, and to everyone, I request support from all the esteemed people out here. May ICC is taking an initiative to do 3 things in Northeast in the coming 3-4 months. One is the Quality Health Conference, where it involves all the major things which is needed for the country as well as Northeast. Number 2, Act East policy ke again we are doing another seminar wherein we are involving different countries, and Dr. Minal was here. Dr. Minal is the right platform where I have come today. We'll need your support, and if needed, we request you to travel and tell what is happening in Singapore and how Singapore can be replicated if we have to replicate out here. Last and not the least, we are also doing a quality accreditation program under the pressure, high pressure of Bijan sir in the month of December, because that is needed. So उनके लिए भी support चाहिए, because मैं कुछ नहीं हूँ. आपको मैं request करता हूँ, आप जितने भी यहाँ esteemed panelist है, मुझे support करने के लिए to make that awareness in Northeast also. Thank you, sir. Thank you very much. Rajiv ji and
Sharma ji, you all want to respond immediately? Because I think the best person to respond initially is Mr. Anil Johri. He's also raised his hand. I know. Anil ji ko hum aakhiri mein rakhe hain kyunki I want him to summarize, because some very important recommendations will emerge from him. So that is why I am not calling on him now. Anil ji, just keep little patience. I would like you to speak last after listening to all the queries, questions, and other things. I will call upon you. Please bear with me. I would like you to summarize. Okay, Sharma ji. Bajon, I think we'll leave this question to Johri Saab. Yeah, good. I was going to say that, but then I wanted Rajiv ji, we'll leave it to Johri ji to answer. I think he's the best person, but I'll just briefly touch on 2 points of the various points raised by Mr. Sohail. Number one is regarding calibration. Every instrument has got a way of being calibrated, whether for electronics or mechanically or chemically, and the manufacturer is the best source for that. As far as accreditation goes and ILAC goes, the Quality Council of India and the NABL are part of the ILAC system. If this particular knowledge is not widely disseminated or not known properly, I think that is the job of QCI to do that. They need to market themselves in a better manner, so people are aware about the capacities and capabilities and the mutual recognition agreements they've done internationally and how they fit into the international system of accreditation and certification for laboratories, etc. The third point is regarding the issue about robustness. Again, over here, the laboratories themselves, they need to come forward, and I agree with your comment that at the time of registration, it should be a pre-registration requirement to have accreditation and not post-registration that one is seeking accreditation. But being a voluntary system, that's how it's functioning. When it is voluntary, it will always be post. So when it is going to be mandatory, it becomes pre. So with proper regulations coming in, like we have regulations for medical devices, we are seeking, time has also come for healthcare services and laboratories to have regulations for that also. And the consumer movement is required for pushing that. Thank you. Very good. I will come to Kuldeep Rai ji, our laughter ambassador. आपने प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाए थे. कुलदीप जी, आप हैं हम लोग के साथ? ये आपको अनम्यूट होकर आना पड़ेगा. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को. You have to unmute yourself. कुलदीप जी, आपका माइक म्यूटेड है. आपका बात सुनाई नहीं पड़ रहा. जी हाँ. Yes, I am there. Yes. So मैं बिजनेस से रिटायर हुआ हूँ, तो मैं एज ए लेमैन एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे कि जो आपने बोला कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो 70% हम जो है हमारे पास, तो वो लैक ऑफ, एक तो आपने बताया कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन मेडिकल डिवाइसेस है, तो उस केस में भी हम ये फिर कैसे ये डिपेंडेंसी हम कम कर सकते हैं? क्योंकि साथ साथ में आपने ये बोला कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन मेडिकल डिवाइसेस है, तो ये हम फिर कैसे ये डिपेंडेंसी को कम करेंगे? और दूसरा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड और मैंडेटरी स्टैंडर्ड, ये जो दो चीजें हैं, इनमें फर्क क्या है, या इस टर्म को एलैबोरेट आप कर सकते हैं in a nutshell? Sure. So regarding the first question, yes, India is import dependent, 70% import dependent for 3-4 factors. पहले इंडिया में टेलीविजन भी नहीं बनते थे, कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनता था, मोबाइल फोन नहीं बनते थे. क्यों नहीं बनते थे? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के हित में ड्यूटी 0% करी हुई थी. तो कंज्यूमर को तो बेनिफिट मिल गया शॉर्ट टर्म में कि 0% ड्यूटी पे आप इंपोर्ट कर रहे हो, टेलीविजन भी और मोबाइल फोन भी. लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंज्यूमर को नुकसान हो रहा था, क्योंकि जब भी डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो कंज्यूमर के लिए महंगा होता है, और बाद में सर्विसिंग सपोर्ट भी महंगी पड़ रही थी. बाद में गवर्नमेंट ने जब 10-15% ड्यूटी लगाई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, तो ये सारी चीजें इंडिया में बननी शुरू हो गई हैं. अब आईफोन जैसी चीज भी इंडिया में बननी शुरू हो गई है. तो मेडिकल डिवाइस में भी जो करंट ड्यूटी है वो 0% से लेकर 7.5% है.
इसलिए हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। जब तक ड्यूटी थोड़ी बढ़ाएगी नहीं गवर्नमेंट, तो बिजनेसमैन के लिए वायबल नहीं होएगा वो मेडिकल डिवाइस बनाना। और भी कारण है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो एज ए बिजनेसमैन समझने वाली बात है वो ड्यूटी की है। नेक्स्ट बात आपकी आती है ट्रस्ट की बात, आपने जो कही। ट्रस्ट के लिए जैसे मैंने बताया, एक वॉलंटरी सर्टिफिकेशन और एक रेगुलेटरी अप्रूवल अगर होएगा ढंग से, तो अपने आप ही एक ट्रस्ट जनरेट होएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी जर्नी। The next point you've raised is regarding the issue about the, if you just remind me the next point once again. Regarding voluntary standard. So regulatory and mandatory standards are same. Voluntary standards can be different. So when you define that you have to meet the BIS standard, जैसे आप पानी की बोतल है उसके ऊपर लिखा हुआ है BIS ISI मार्क, तो वो जो पानी बनाने वाला है वो ISI का जो BIS स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से टेस्टिंग करके ISI मार्क लगाता है। दैट इज द मैंडेटरी स्टैंडर्ड अंडर द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल। अगर वॉलंटरी वाली बात है तो आदमी कह सकता है कि एक पर्टिकुलर ISO स्टैंडर्ड है जो BIS से भिन्न है या उससे बेटर है, स्विट्जरलैंड का स्टैंडर्ड है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, तो वो दोनों लोगों लगाएगा या दोनों क्लेम डालेगा कि मैं जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो कर रहा हूं और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है उसको भी मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं CE मार्क लगा रहा हूं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो एक वॉलंटरी तरीके से मैं मार्केट में एक CE सर्टिफाइड प्रोडक्ट मैं दे रहा हूं मार्केट में। दैट बिकम्स। थैंक यू राजीव जी। कुलदीप जी आप जुड़े रहिए, अनिल जौहरी जी आपको थोड़ा सा और विस्तार से समझाएंगे, जुड़े रहिए। नवल आनंद जी आपने काफी देर से हाथ उठा के रखे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप अनम्यूट करके अपना वीडियो ऑन करके आ जाइए, नवल आनंद जी। Thank you. I think I am unable to have my video started. Doesn't matter. Not to worry. So I'm very glad to be a part of it, though I am in two settings. One is a function going on, but I want to just make a comment. I just visited the ISB Mohali, Insights forum, and we were planning something like 2047 agenda for research and growth and development of the Indian economy. Now, the essence and then the nichode of this was that there is, the goals that we are setting for ourselves have to be matched with the capacities, which probably, we will take time, or we should have the will and the resources to have that capacity. I am sure all of this talk of setting up standards, I have written in a small way about the need for taking two major pillars. One is regulation and the compliance. Now, they are complementary, sir, to each other, and they must actually match up. It's like the wife and the husband. So you need to have the consent and the acceptance from both the ends. Although we want to move up into the ecosystem of greater and more transparent regulation. So my own comment would be to all the stakeholders to show a way where, we've been talking for years on these issues. How to get... Yes, I agree with you, Navalji. Let Mr. Sharma respond to you. Sharma ji. Yeah, I was looking to a comment from him, sir. Yes. Sharma ji. Thank you, Vajon. This is a very important question. See, the point is that strategic developments that have taken place over a last 5, 7, 10 years period of time, they have created a new opportunity for the Indian businesses also. So while we had been talking about China +1, and even that position of +1 is being taken over by somebody else, partially or totally. So we need to recalibrate our strengths, and we need to work out on our capacities, and we need to provide resources for that. And resources will not necessarily come from the public sector. They will come from elsewhere also. For that, we need a very clear-cut, harmonized, properly calibrated ecosystem. And that includes the regulation, that will include the policies, that will include everything.
Our ultimate objective in the vision for 2047 will be to position India as the only destination for medical devices manufacturing. We will manufacture in India, we'll make in India, but we'll make it for the globe. That is what our motto should be. And resources will need to be provided, and they will come through. That will not be a too difficult a question. That's what my take on this point is. Thank you. Yeah, very good, very good. Because, as you know, and all of us know, that for the last 40 years, we have been working on empowering the citizens, empowering the consumers to be able to distinguish or differentiate between a good quality product and a substandard product. Now, in order to do that, you need resources, you need investors, you need technically competent people. So, Naval, Anandji, don't give up. The journey is long. It's not a very short journey that you have a magic wand and you just rotate it and it will happen. It can't happen like that. A lot of sacrifice, a lot of hard work. People have to come in, because whenever I visited overseas, what did I learn from them? The only thing I learned is that people are committed, highly committed. They come forward to give their whole legacy. जो भी वो earn किया है, वो country को वापस दे देता है. You see, and ये जब तक feeling आपके अंदर में नहीं आएगा कि हम कैसे खुद मदद करें सरकार को, I don't think we can change the country, but we have changed. We have changed. In the last 40 years, at least I have seen the change in terms of consumer awareness, consumer protection, and various other factors in terms of patient safety, quality, and other issues. So don't give up, Navalji. We are there. We will work together and we will take it forward. I would now like to, Navalji, you want to again come in quickly? Prompt response. Just short response. I thank you very much for your guidance, Dr. Bijon. On the note that you've said, I have been so persistent actually for now 4 decades. Very good. Same. Though I am disabled physically, I have a locomotor disability. I think I shared that with you. Not to worry. Your other doors are open. My resolve to actually ensure that we reach our goals is unfettered, and I am sure I work very vocally about certain subjects at this forum. Very good. Keep reaching us every Sunday, 11 o'clock. Please reach us every Sunday, 11 o'clock. Without fail, we are there. Opportunity, yes. I'm very good. Now I will come finally because we have run out of time. And Anil Johri ji has been waiting very patiently. Anil Johri ji, you have to now summarize before we propose the vote of thanks to the two keynote speakers who have joined us today and given so much of time. And we are much beyond time. You have to close at 12:30. It is going to be 1 o'clock now. So Anil Johri ji. Thank you, Bijonda. Good afternoon. No, we want to see you. We want to see you. I am trying to start my video, but it's not getting on. I'm wondering what is the problem. So I'll start. Go ahead. Good afternoon, everybody, and thank you very much, Bijonda, for inviting me and then giving me the toughest task, which is to summarize a discussion which has gone all over the place beyond the subject that we were starting with. So let me try and, compartmentalize the conclusion. Our subject was the need for a separate act for medical devices. So I would like to say a few things on that subject first. Globally, there is no model which says how regulation has to be done. We have example of so-called gold standard of US FDA, which regulates food, drugs, medical devices, everything. On the other hand, we have several examples where food certainly is separated as a regulator. Food regulator is separate and drugs regulator is separate. So as far as I am concerned, and given that CDSU has been a very heavily pharma-oriented regulator for obvious reasons, the idea of a separate regulation for medical devices is quite, quite tenable. But equally, I know that the government, and Sharma ji has worked in government much more than I have, government is usually reluctant to create new organizations and new areas. Even, for example, if you look at today, they are creating a carbon trading scheme. They have parked it in Bureau of Energy Efficiency.
They are creating a green credit program. They have parked it in Indian Council of Forestry and Research, although they may not be the best places for these schemes, and still they tend to go for existing institutions. So my suggestion to Rajiv Nath ji is that while he advocates for a separate law, he must have a plan B also in mind, which is that they will remain in the same organization. And my plan B would be to cite government. The governments usually go by precedent also. Either you show them global practice or you show them precedents. Now, we have a precedent of last 15-20 years that A, regulators are established as an autonomous body, like FSSAI, TRI, IRD, etc. B, regulators have a chairman who is at the level of the secretary. C, we have an executive, either full-time chairman or even honorary, but full-time, even if full-time chairman is there. But I would argue for, as a plan B, is to replicate this structure, have 3 verticals, an equivalent of 3 DCGIs, 1 DCGI for pharma, 1 DCGI for Ayush, and 1 DCGI for medical devices, so that there are clearly 3 verticals. And why I'm saying at DCGI level, because if DCGI is the topmost person, then the below force becomes lower and lower. And in government, the most respect is given to a joint secretary level person. So it's very important to have a joint secretary level person as boss of medical devices, and not a pharma person as boss of medical devices. So my suggestion would be to think of this structure as plan B. That is for Rajiv Nath ji, for his advocacy. I have expressed similar views in wherever I have been asked. Secondly, somebody talked about certification of medical devices. Earlier, we were not regulated. As Rajiv Nath ji explained, that we are now regulated fully. We should assume technically that from 1st of October 2023, all devices are regulated. So we should have confidence in a regulated, like, do you look for a certification on drugs? You don't. You assume that drug is safe. Same confidence should come in medical devices. We should assume now that everything is regulated, that the medical devices are of quality and safe. Third issue was about preference of doctors for international quality. In fact, the very basis, Rajiv would remember, for ICMED scheme, because I was there and 2 of us were the starting point of ICMED scheme. The very basis of ICMED scheme was to produce a local scheme which can certify to world-class standards. That is the positioning of that scheme. So what we should be doing, or QCI should be doing, is to market to hospitals and to doctors that here is a scheme which will assure you the same standards that US FDA or CE mark assures to you. This should be our positioning as far as voluntary certification is concerned. I also saw the confusion between regulation and certification, etc., which is very common among Indian public. The reference also came to hospitals and nursing homes, etc. So we should be very clear. As far as hospitals are concerned, there is an act in place called Clinical Establishment Act 2010. The unfortunate part is it has been adopted only in 13 states. The option, and now it's a state subject, option for states is that either they adopt CEA or they have their own act. All union territories and 13 states have adopted, only minus Delhi. Among the union has territories, anybody implemented? Anil ji, you have any? I am coming there. That's now under clinical establishment, step by step. Under Clinical Establishment Act, there is a provision for minimum standards. Minimum standards of medical labs have been notified. You can go to Clinical Establishment website and see that those standards have been notified. Minimum standards for hospitals have been finalized. I was in a meeting in March. They have not yet been notified. Minimum standards for Ayush hospitals have not yet been finalized. They are in draft stage. So this is the stage. So for an advocacy body like yours, Bijonda and RJS, I think this is something that you should be pushing for, advocating, and maybe a session on Clinical Establishment Act would be a good thing to do next time, one of your webinars that you're doing. So we need to push the services part. Unfortunately, goods are regulated now. Drugs are regulated, Ayush, pharma, medical devices. Food is regulated, but services are not regulated, and we need to push for those regulations. So this is another area that needs to be looked at. Somebody said NABL accreditation, I think the person who was from ICC. Now, please remember that
While on products, we should aim for world class immediately, because we are talking about export. We talk about somebody, Sharma ji also said, make in India concept was that we make here and export to all over the world. You cannot export unless you make to global standards. Simple as that. So therefore, the focus on in products is certainly on international standards, that we should comply with international standards. But on services, the scene is entirely different. In services, we are way behind in terms of the level of quality. So accreditations are voluntary, whether it's NABH accreditation or NABL accreditation of lab. These are voluntary and should remain voluntary. They should not be made compulsory, because otherwise 80% of our hospitals, do you know that we have merely 10 or 11,000 hospitals who are certified or accredited out of about 1 lakh hospitals. There's a gap of 90%. Similar is the situation with labs. So what we should focus on as advocacy... What is the solution to that? I'm giving the solution. As an advocacy group, what we should focus is on minimum standards in the CA. We should want that minimum standards in the CA must be enforced. They are not being enforced today. Well, they are by law. They have to be enforced by law. Accreditation should remain a means of excellence, but minimum standards should be enforced, and that should be our focus. Because if you focus on accreditation to be mandatory, believe me, accreditation has happened in 20 years of 18 years of NABH. We have 10,000 hospitals. It's almost impossible to get 1 lakh hospitals to international class. So our focus should be on minimum standards which are being specified in the CA or have been specified for medical lab. That would be my strong recommendation for going forward. Even those have not been implemented. If those are implemented, at least a journey would start. The quality journey for labs and hospitals would start, which is not starting. So this would be... Anil ji, you must be aware, और सबके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि my PIL is still lying in the Honorable High Court, and we are trying to move to also ensure that some of the directives which the High Court has already given to the government regarding Clinical Establishment Act implementation, there is a contempt of court being moved against that. So the court has given them a last chance. Let's hope that it gets implemented quickly. Only when it gets implemented, then only we will have a conversation in terms of how we can make it implementable as quickly as possible by the state governments and not rush to the court again with the PIL. So I'm just waiting to understand that from people like you. We will have a conversation on that. So two more issues. One was on testing, one was on calibration. Please. That every public or private hospital should have calibrated equipment will be part of the minimum standards under CA. So we have to focus there, because that is a part of the service that they are providing. So we need to focus again for calibration of medical devices in the hospitals. They will have to be enforced through the regulations under CA. As far as testing labs are concerned, see, testing, we have examples in food sector and several other sectors. Testing is not profitable business until there is an assured demand for testing. That demand without regulation never came, and therefore we found that in COVID time, we did not have a lab for N95, we did not have a lab for PPEs, we did not have labs at all. Why? Because there was no demand. Unless there is demand, and please remember, the private sector will step in only when there is a profit possibility. Rajiv Nath is sitting here, doyen of private sector. He will tell you more than I can tell you that private sector will step in when there's profit. Private sector stepped in food when there was profit in testing. Where was the driver for testing in food? The exports, not the domestic regulation. Toys, private sector stepped in when we started regulation of toys. There were merely 4 labs. Today there are 50 to 60 labs for testing of toys when regulation came. So regulation and export, these are the 2 areas which generate demand for lab. When the regulation says you should test every 6 months, there will be demand. Export, because exporters do not want to take a risk that they send a wrong product and it gets rejected, which is a huge cost for them. So on medical devices, my suggestion is that some of the IITs and NIPERs should be funded by government to set up labs for medical devices, because right now private sector is not ready to step in. It will not happen. It will happen very slowly. And therefore, the products which are being imported, for example, why would private sector set up labs here? Those which are being manufactured here, they'll set up. नाइपर तो शुरू हुआ था यही लक्ष्य से. हम लोगों सबको मालूम है नाइपर कहाँ स्ट्रगल कर रहा है आज भी. So even if we say that government facilities are not adequate, that's correct. But still,
which is better than having nothing. Right now we are they're having not nothing. utilizing even the resources Existing facilities. Yeah. So, And as far as involvement of private sector is concerned, Rajiv has spoken about it. The best way is that you use third-party labs, third-party audit agencies, and you overcome the two problems that regulators so typically Northeast face. Anilji, Northeast we are trying to do one consultation on 27th of December on this issue, how to encourage private labs and government labs to come in to enable small scale, medium scale and other industries to be able to become quality conscious and quality driven. तो इस पे हम लोग करेंगे, तो आपसे हम लोग चर्चा आगे रखेंगे इसको लेकर. Just a small suggestion, Bejonda, there was a scheme in Ministry of Food Processing Industry about funding food labs in private sector as well as in government sector. My suggestion has been, but nobody is listening, that is that there should be in a central ministry at some place an open-ended scheme for funding labs, private as well as government. Let's start working on it. Because you never know in which sector the need arises. Then that ministry start making a proposal, it takes a lot of time. So there should be a standing scheme at a central place, sector agnostic. Yeah, the point we are looking at in Northeast is food processing and healthcare. Now, these are the two areas which we are looking at because both are important. And Northeast is quite barren. Northeast needs to be looked into in a very strong manner. Because we are talking about developing Northeast, but we are not looking at Northeast. So we have to go to Northeast and start this initiative. Having said that, I would like to close the session by requesting our eminent member of the consumer organization, Beena ji, who is the past president of the All India Women's Conference and has been a very active member, taking the women leadership together because we firmly believe if the country has to grow, the women has to come forward. So having said that, I would request Beena ji to kindly propose the vote of thanks before we request Uday Manna ji to close the session for today. Beena Jain ji. You have to unmute and come. Beena ji, you have to unmute and come. Thank you, Bijan ji. And good afternoon, everyone. Just I want to say that both the panelists were very good, and they gave us the details for everything. And it's a very, very important subject. People are suffering because of substandard of devices, and I think sometimes they lose the interest also and faith in this. And I want to thank both of the panelists and the participants. Their questions are very valuable, and we all should know what is going on and what to do. The government has to take interest in this line also. We always, our government working for the housing and the food and other facility for needy children, needy people. But I feel health is very, very important. So we should pressurize government to take up this matter seriously, and medical, they should improve in all the fields in medical. And I want to thank Mr. Praful Bhai, who is taking a lot of interest in this. And again, I want to thank Mr. Bijan Mishra, who take up all these important issues, which are very valuable, very important in our life. So thank you, both of them. And I want to thank all the participants, their valuable suggestions, and Mr. Uday Manna ji, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया एंड जिससे हम लोगों तक पहुंच रहे हैं. People are attending and asking and taking interest, and his media team also. Media team is doing their work very nicely, and this is the very good opportunity for all of us to participate here and
lot of vote of thank to everyone. Thank you very much. Thank you very much. Uday Manna ji, kindly. जय हिंद। प्रोफेसर बिजोंदा इस धरती पे याद रखे जाएंगे। 2047 तक का जो कमिटमेंट है वो शायद बिजोंदा ही ले सकते हैं, इतना बड़ा भारी जो है, लेकिन धीरे धीरे इसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और बीना जैन जी ने कहा, उदय मन्ना जी ने प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम भारत के लोग का ये प्लेटफॉर्म है। और आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है, और ये संविधान दिवस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो अधिकारों की रक्षा करता है, सभी लोगों को रेगुलेट करता है, इवन सरकार को भी कानून के अनुसार चलने की हिदायत देता है। तो हम भारत के लोगों का ये प्लेटफॉर्म है, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। तो जो जुड़ेंगे वो जोड़ेंगे। और ये वर्ल्ड वाइड, बिजोंदा कह रहे थे कि नेशन वाइड नहीं, इसको वर्ल्ड वाइड करेंगे। इनकी वीडियो भी आई है कि सकारात्मक वर्ल्ड बनाना है, वर्ल्ड वाइड इसको ले जाना है, इस आंदोलन को। तो संविधान दिवस पर यही कहते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और टेक्निकल टीम को भी कहेंगे कि एक्सीलेंट जॉब, काफी अलर्ट होकर वो लाइव भी कर रहे हैं हम लोगों के जो ट्रेड फेयर में। ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 42वां संस्करण है, और लगभग 7-8 साल से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया समर्थन कर रही है। अब आरजेएस का एक्सटेंशन हो गया है पॉजिटिव मीडिया का, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, यानी कि पॉडकास्ट भी आ गया है, हम लोगों की रिलीज भी जारी होती है। तो हर तरीके से हम लोग सकारात्मकता को, हर मीडिया माउथ कन्वासिंग करके, काफी ट्रेड फेयर में लोग जुड़े भी हैं, वो आगे आएंगे और को ऑर्गेनाइजर भी बनेंगे ताकि 2047 तक का सपना पूरा हो। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है, सभी लोग जानते हैं। बहुत कम विद्यार्थी ये जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को मंजूरी दी, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया गया। और 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और हम लोग हर साल 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। तो ये बिगिनिंग है। अगला हम लोग नेशनल डे मनाएंगे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया, पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी डे, दिव्यांग दिवस के रूप में हम लोग 3 दिसंबर को मनाएंगे। उसके बाद 10 दिसंबर को प्रफुल्ल भाई का प्रोग्राम है, 17 दिसंबर को आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दिदेवार जी का है। हर महीने प्रोग्राम हो रहे हैं प्रफुल्ल भाई का और दिदेवार जी का। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस जो है वो प्रभात नमकीन के जो चेयरमैन हैं लक्ष्मण प्रसाद जी, जो कि कल ट्रेड फेयर में हम लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ ट्रेड फेयर घूमे, वो 3 दिसंबर के सह आयोजक होंगे। तो मैं टेक्निकल टीम को और जितने भी हमारे शर्मा जी हों, राजीव नाथ जी हों, बिजोंदा हों, बीना जैन जी, प्रफुल्ल भाई, और जितने पार्टिसिपेंट्स आए, जो लोग जुड़े, हर रविवार ये देश के लिए, देश के नाम ये कार्यक्रम हो रहा है। तो बिना नागा जो है इसको करने की पूरी कोशिश है, और आप लोग जुड़ते हैं तो उत्साह बढ़ता है, और भारत को सकारात्मक बनाने का इतिहास भी आप लोग लिख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू राजीव नाथ जी। Thank you very much everybody. Thank you. Thanks everyone. Thank you जी। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए,
क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।